जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन IAS PT 365 सीरीज़ में। इसमें हम लोग पॉलिटी करने वाले हैं और यह एक मास्टर वीडियो होगा और इस एक ही वीडियो में पूरा का पूरा ये बुक कवर करने वाले हैं हम लोग। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और वीडियो को आराम से देखते रहिए। बस आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम एक ही चैनल में पूरा का पूरा ये वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं। और इसके साथ हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का भी PT 365 शुरू कर रखा है, तो आप लोग उसे भी देखिए और अपना करंट अफेयर की तैयारी को और मजबूत किया। जैसे जैसे PT 365 आते रहेगा, जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स का आएगा, फिर आर्ट एंड कल्चर का आएगा, फिर इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी का आएगा, तो वो सब भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले। तो आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें और आपकी करंट अफेयर की तैयारी हम आसानी से कर देंगे। आपके पास करना ही है कि अगर आप लोग के जान पहचान में कोई ऐसा है जो इस बार UPSC प्री देने वाला है, तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये मास्टर वीडियो, और इसी में हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले ये बुक। तो बस हमारे साथ बने रहे और एक बार में अगर आपसे नहीं हो रहा तो 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार भी करके रिवाइज करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। तो बस रिविजन करते रहिए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कीजिए। बस यही हमारी उम्मीद है आपसे और यही मनोकामना कि आपका एग्ज़ाम अच्छा से अच्छा हो। बस हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और कंप्लीट करें। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा मास्टर वीडियो। जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी फॉर यू में। और इसमें हम लोग का जो इतने देर से वेट कर रहे थे विजन IAS का PT 365 पॉलिटी, वो आ चुका है, जो अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का पूरा कंपाइलेशन है और इसे अब हम लोग करने वाले हैं। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हम लोग पूरा का पूरा ये कंपाइलेशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक 1 से, जिसमें इशूज़ रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से शुरू करने वाले हैं और हम लोग यह पूरा का पूरा बुक खत्म करने वाले, इतना भी इसमें इशूज़ जो भी टॉपिक्स दिए हुए यहाँ 8.8 तक। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहें और देखते रहें कि हम लोग कैसे इसे कंप्लीट करते हैं। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो विजन 365 PT पढ़ना चाह रहे थे या उन्हें इस चीज़ की डिमांड थी, तो उन तक इस चीज़ को इस वीडियो को जरूर पहुंचा ताकि उनका रिवीजन अच्छे से हो सके। और इसे हम पूरा कंप्लीट करने वाले। इसे क्या मतलब, आने वाले जितने भी PT 365 होंगे, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी हो गया, तो सारे कंप्लीट करने वाले। तो बस हमारे साथ चैनल में बने रहें। और अगर आप लोगों ने वाजीराम एंड रवि का करंट अफेयर वाला सीरीज़ नहीं देखा तो वो भी देख ले, वो भी हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है और उसमें भी रेगुलर वीडियो जा रहा है करंट अफेयर का, तो उसे भी आप लोग देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है इशूज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें पहला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो वाई इन द न्यूज़ द लैंडमार्क केशवानंद भारती जजमेंट 1973 विच प्रोपाउंडेड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कंप्लीटेड 50 ईयर्स। तो इसके 50 साल पूरे हो गए थे। अबाउट द केशवानंद भारती केस 1973, इट डेल्ट विथ ए पिटिशन अगेंस्ट द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड बाई द केरला गवर्नमेंट अंडर द केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 as a violation of fundamental rights FRs under Article 25, 26 and 31 of the Constitution. The case was headed by the largest ever bench, that is 13 judge bench of the Supreme Court. Key outcomes क्या था? तो introduction of basic structure doctrine, upholding the validity of 24th constitutional amendment. The Supreme Court held that Parliament has the power to amend any or all provisions of the Constitution, including fundamental rights. However, such amendment should not alter, damage, or destroy the essential features of the basic structure of the Constitution. Earlier, in Gokhlanand case 1967, the Supreme Court held that the power to amend the Constitution under Article 368 was not unlimited and that the fundamental rights guaranteed under the Constitution could not be abrogated or abrogated by the constitutional amendment. Power of judicial review क्या हो रहा है इसमें, तो देखते हैं। The court held that the power of judicial review is an integral part of the basic structure of the constitution. Other judgment में क्या आया, तो Supreme Court upheld the 25th and 29th constitutional amendment except for the parts that curtailed its power of judicial review and asserts that the preamble is a part of the constitution and hence amendable. About basic structure doctrine क्या है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। It holds that certain fundamental features of the constitution cannot be amended or abrogated by the parliament. There is no mention of the term basic structure anywhere in the Constitution of India. Significance of doctrine क्या है, तो check on the power of parliament to amend the constitution, ensure that the constitution remains a living document that is responsible to changing time while preserving its fundamental values and principles. Lay down several principles that have become the bedrock of constitutional law in India, such as the rule of law, separation of power, and the independence of the judiciary. Ensures that the federal structure of the constitution is not undermined.
shapes the judiciary approach, the constitutional interpretation. बॉक्स में देख लेते क्या है, तो इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कैसे कैसे इवॉल्व हो उसके बारे में है। तो पहला है AK गोपालन केस 1973, ठीक है। फिर है शंकरी प्रसाद केस 1951, फिर है 1965 में सज्जन सिंह केस, फिर 1967 गोलकनाथ केस और 1971 केशवानंद केस, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं AK गोपालन केस, फिर शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस में पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये था। फिर गोलकनाथ केस में क्या हुआ, तो आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर एनी अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट था। फिर फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, ये हुआ। फिर 1971 में हुआ गया, तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन आर लिमिटेड, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें देखें तो 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13, सो पार्लियामेंट कैन अमेंड इट, तो ये पास हो गया कि पार्लियामेंट उसे अमेंड कर सकता है। और दूसरा क्या था 25th में, तो सेक्शन 2 कर्टेल्ड राइट टू प्रॉपर्टी विथ ड्यू कंपनसेशन, एंड सेक्शन 3 प्रोसीडेंस ऑफ DPSP ओवर फंडामेंटल राइट्स, तो DPSP को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई फंडामेंटल राइट्स पे। took away a space of judicial review from 39B and 39C, 39B और 39C से जुडिशियल रिव्यू को हटाया गया, और उसी में 1973 में केशवानंद भारती केस आया। अगला सम प्रिंसिपल्स दैट आर प्रेजेंटली पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, तो कुछ प्रिंसिपल कौन कौन से देख लेते हैं। पहला सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया, सेकंड एसेंशियल फीचर्स ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम सिक्योर्स टू द सिटीजन, नेक्स्ट इज मैंडेट टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट, next supremacy of the constitution, next republican and democratic form of government, next secular and federal character of the constitution, अगला है separation of power between the legislature, executive and judiciary, अगला unity and integrity of the nation, next is power of judicial review, and last is harmony and balance between fundamental right and DPSP। तो और भी बहुत सारे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो वो हम लोगों ने पढ़ दिया है। our next topic, independence of district judiciary basic structure, तो ये न्यूज़ में क्यों रहा, वाई इन द न्यूज़, तो सुप्रीम कोर्ट इन द ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस स्टैंड दैट द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इंडिपेंडेंस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मोर इन द न्यूज़ में क्या था, इट ऑल्सो हाईलाइटेड अदर प्रिंसिपल्स, पहला जिसमें इंटीग्रेशन टू टर्म्स ऑफ पे, पेंशन एंड अदर सर्विस कंडीशन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, separation of power, officers of the judiciary should be treated separately from staff of legislature and executive beings, unified judiciary में क्या है, तो service condition of judges for similar posts are equivalent across states, district judiciary क्या है, तो district judge is the highest judiciary authority in the district, organizational structure, jurisdiction and nomenclature or subordinate judiciary are laid down by states, hence that they differ slightly from a state to state, broadly 3 tiers below the high court। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। लॉ जुडिशरी में यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट होता है, उसके बाद फिर आता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट। तो इसमें 2 तरह का होता है, सिविल साइड और क्रिमिनल साइड। सिविल साइड में देखते हैं तो उसमें होता है सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, फिर होता है मुंसिफ जज कोर्ट, और क्रिमिनल साइड में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। और नेक्स्ट टॉपिक इज एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो भाई इन न्यूज़ में क्यों आया, ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट्स 2019 डिसीजन टू रिपेल द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर JNK अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है, तो ऑन August 5, 2019 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोमोलगेटेड एन ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटमेंट टू जम्मू application to Jammu and Kashmir Order 2019, which stated that provision of Indian Constitution are applicable in the state. Parliament also enacted the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, which bifurcated the state into 2 union territories. The petitioners have challenged the constitutionality of this action of the union. Judgment क्या आया इस पे, तो upholding the presidential proclamation of August 2019. The Supreme Court held that Jammu and Kashmir did not retain any element of sovereignty after it acceded to India in 1947. Supreme Court held that Article 370 is a temporary transitional provision. The court held that UT can be carved out of a state
Parliament may by law form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or part of a state by uniting any territory to a part of any state. According to explanation 1 to Article 3, the word state are used in Article 3 Clause A include a union territory. Relying on the judgment in S.R. Bommai case, Supreme Court held that actions of President during a state emergency were open to judicial scrutiny. आर्टिकल 370 ए हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में क्या है देख लेते हैं. तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन IOA इन अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह the last ruler of Jammu and Kashmir signed the IOA through which he agreed to accede his state to the dominion of India. Temporary provision for Jammu and Kashmir क्या था. तो under the constitution article 370 was placed in part 21 titled temporary and transitional provision. Article 370 except for defense, foreign affairs, finance and communications, Parliament needed the state government's concurrence to apply for all other laws. Article 35A of Indian Constitution, it streamlined out of Article 370 and gave power to Jammu and Kashmir Assembly to define permanent residents of the state, their special rights and privileges. आर्टिकल 3 में क्या था. तो इट प्रोवाइड्स दैट पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड अल्टर of areas, boundary or names of existing states. First proviso of the article states that bill for above law shall be introduced in either house of parliament on the recommendation of president. If the bill affects the area, boundaries or name of any state, the president must refer the bill to the state legislature for its view. अगला टॉपिक है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023. तो न्यूज़ में क्यों रहा. रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली NCTD अमेंडमेंट एक्ट 2023 रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. की हाईलाइट्स ऑफ द NCTD अमेंडमेंट एक्ट 2023 क्या है. द नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी NCCA it creates a new statutory authority NCCSA to make recommendations to Lieutenant Governor LG regarding transfer, posting, vigilance and other incidental matters. NCCSA shall be decided matters by the majority of voters of the member present and voting. The central government will appoint both the principal secretary and chief secretary. Power of the LG matters whether the LG may act solely or his discretion are matters outside the legislative competence of the Delhi Legislative Assembly but which has been delegated to Lieutenant Governor, or matters where he or she is required by law to act in his discretion or exercise any judicial or quasi-judicial function. Primacy to LG क्या है. तो it expand the discretionary role of LG by giving him power to approve the recommendation of the NCCSA or return them for reconsideration. The LG's decision will be final in case of difference of opinion between him and the authority. Disposal of matters by ministers. Certain matter must be submitted to the LGs by the ministers of Delhi government through the chief minister and the chief secretary for his or her opinion prior to the issue of any order. This includes proposal affecting क्या क्या है. तो द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ दिल्ली, relation between the Delhi government and the central government, Supreme Court or other state governments, summoning, prorogation and dissolution of the legislative assembly, and matter on which LG is to give an order in his sole discretion. The governance model of Delhi NCT क्या है देख लेते हैं. Classification as a union territory UT under the States Reorganization Act of 1956. Delhi was classified as a UT governed under Article 239 of the Constitution. It states that UT are directly governed by the President or an administrator appointed by the President. Special status क्या था. तो following the recommendation of S. Balakrishnan Committee, the 69th Constitutional Amendment Act of 1991 conferred a special status of Delhi and designated it as a National Capital Territory of Delhi NCTD. It added Article 239AA to the Constitution and made Delhi a UT with a legislature and a council of ministers.
The Lieutenant Governor LG is designated as the Administrator of Delhi, operating with the aid and advice of the Council of Ministers of Delhi. Power of Delhi Legislature. The Delhi Legislative Assembly has the power to legislate over subjects in the state list and concurrent list, except for police, public order, and land. Also, Parliament can legislate over all matters in the state and concurrent list related to Delhi. GNCTD Act, the Government of National Capital Territory of Delhi. GNCTD Act 1991 laid down the framework for the functioning of Delhi Assembly and the Delhi government. यहाँ पे देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ NCCSA. इसमें क्या, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एज चेयरपर्सन, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट एज मेंबर सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एज अ मेंबर. फिर एवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट देखते हैं कैसे कैसे. तो 1951 में हुआ दिल्ली मेड ए पार्ट सी स्टेट. फिर 1952 में हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली LA वाज क्रिएटेड विथ इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर. 1956 में हुआ अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट दिल्ली became a UT. 1966 Delhi Administration Act provided for a limited representative government in Delhi. फिर 1991 में हुआ 69th Constitutional Amendment Act and GNCTD Act 1991 passed. 2021 में GNCT Amendment Act 2021. Our next topic is preventive detention. Why in news? The Supreme Court, while setting aside a detention order, observed preventive detention law are a colonial legacy and they must be used only in rarest of the rare case. About preventive detention, तो क्या है, तो preventive detention means detention of a person without trial and conviction by a court on a mere reasonable apprehension of him doing an activity dangerous to public order. Its purpose is to prevent the person from committing an offence in the near future. Protection against arrest and detention under Article 22 Clause 1 and Article 22 Clause 2 is not available to a person arrested or detained under preventive detention law. Article 22 Clause 3. Parliament has exclusive authority to make a law of preventive detention for reasons connected with the defence, foreign affairs and security of India. Both Parliament as well as state legislators can concurrently make a law for reasons connected with the security of a state, maintenance of public order and maintenance of supply and services. Multiple laws such as Code of Criminal Procedure, Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act NDPS 1985, Unlawful Activity Prevention Act etc. permit preventive detention. Constitutional provision related to preventive detention and judicial pronouncement related to preventive detention. तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल देख लेते हैं. आर्टिकल 22 क्लॉज 1, नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ ground of arrest, nor shall be detained right to consult or be defended by legal practitioners. Article 22 Clause 2, every person who is arrested, detained in custody shall be produced before magistrate within 24 hours of such an arrest. Article 22 Clause 3, above two clauses will not apply to a person who is detained in accordance to a law providing for a preventive detention. Article 22 Clause 4, no person can be detained for more than a period of 3 months unless an advisory board confirms that there is sufficient clause for continuation of such detention. Article 22 Clause 7, a person can be preventive detained for more than 3 months without option of any advisory board if Parliament by law provide maximum period of such detention and circumstances, classes of person and classes of case to which such law may apply. अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या क्या देख लेते हैं. तो AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, द कोर्ट गेव अ ग्रीन फ्लैग टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1953. अगला है सुबिनान लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1954. सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट ए कोर्ट रूम इज नॉट competent to inquire into reality or in any case of the fact which are referended as ground of detention. Sambhunath Shankar versus State of West Bengal. Court held that sometimes state must take such extreme step to maintain the security of the country. अगला टॉपिक है पर्सनैलिटी राइट्स.
न्यूज़ में क्या था, तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांटेड प्रोटेक्शन टू अ फेमस बॉलीवुड एक्टर्स पर्सनालिटी राइट फ्रॉम मिसयूज बाय थर्ड पार्टी। अबाउट पर्सनालिटी राइट क्या है, तो पर्सनालिटी राइट्स रिफर्स टू द राइट ऑफ अ पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज और हर पर्सनालिटी अंडर द राइट to privacy or property. It include name, voice, signature, image, or any other feature easily identified as maker of personality. Personality rights in India. Personality rights or their protection are not expressly mentioned in any statute in India but are traced to fall under the right to privacy and the right to property. Two components of personality rights: right to publicity, right to keep one's image and likeness from being commercially exploited without permission. It is governed by statutes like the Trademark Act of 1999 and the Copyright Act of 1957. Right to privacy, right to have right to not have one's personality representative publicly without permission. It is broadly governed under Article 21 of the Constitution and the Supreme Court judgment in Justice K.S. Puttaswamy retired case 2018. Posthumous personality rights, emblems and names, prevention of improper use Act 1950 protects unauthorized use of a few dignitaries' name and symbol listed in its schedule. IPC. If negative reference or derogatory representation is made to any decreased person's reputation to or their family, a defamation suit can filed under the Indian Penal Code. Personality rights under International Convention. There is no explicit international convention or treaty on protection of the publicity right to date. However, certain publicity right can be derived from the following international conventions. पहला Rome Convention 1961. It protects performers' right, phonogram producers' right, and broadcasting rights. TRIPS Agreement 1994. It secured certain rights of the phonogram producer, live performer, and broadcast rights. WIPO Reference and Phonogram Treaty WPPT. It protects the right of performer and phonogram producer, particularly in digital environment. Constitutional provisions related to personality rights and judicial pronouncement related to personality rights. तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल देख लेते हैं. तो आर्टिकल 21 states that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. आर्टिकल 300 में क्या है देख लेते हैं. 300A titled as right to property was introduced by 44th Amendment Act 1978 of the Constitution Act of India. It states that no person shall be deprived of his property save by the authority of law. फिर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू पर्सनालिटी राइट्स क्या है, तो दीपा जय कुमार वर्सेस अल विजय केस 2019 मद्रास हाईकोर्ट हेल्ड दैट पर्सनालिटी राइट्स cease to exist after the death of the personality and cannot be inherited by legal heir. Sakshi Malik versus Venkateshwara Creations Private Limited and ORS case. Bombay High Court held that using another's image and must especially a private image without consult is illegal. Our next topic is hate speech. तो ये न्यूज़ में क्यों आ गया, तो रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड द नीड ऑफ स्टेक होल्डर टू फाइंड अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ हेट स्पीच. अबाउट हेट स्पीच क्या है, तो हेट स्पीच हैव नॉट बीन डिफाइंड इन एनी लॉ इन इंडिया. हाउएवर हेट स्पीच जनरली रिफर्स टू incitement to hately primarily against a group of person. Hate speech can be conveyed through any form of expression, including image, cartoons, memes, objects, gesture, and symbols, and it can be disseminated offline or online. Regulation of hate speech in India. Constitutional provision. क्या क्या है, तो hate speech can be curtailed under Article 19 Clause 2 on the ground of public order, incitement to offense and security of the state. भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 196 क्लॉज 1 penalizes promoting enmity between different group on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc.
Section 2299 defines punishment for deliberate and malicious act intended to outrage the religious feeling of any class. Section 235 Clause 1 and Clause 2 penalize the publication of circulation of any statement, rumor, or report causing public mischief and enmity, hatred, or ill will between classes. Representation of People Act 1951. Section 8 disqualifies a person from contesting an election if he is convicted for indulging in acts amounting to illegitimate use of freedom of speech and expression. Section 123, Clause 3A and Section 125 prohibit the promotion of enmity on the ground of religion, race, caste, community, or language in connection with election as a corrupt electoral practices. Protection of Civil Rights Act 1955. Section 5 penalize incitement to any encroachment of encouragement of untouchability through words either spoke or written or by sign, visual representation or otherwise. Religious Institution Prevention of Misuse Act 1988. Section 3 Clause G prohibits religious institutions or their managers from using religious premises to promote disharmony or hatred among various religious groups. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू हेट स्पीच में क्या क्या है, तो प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, द कोर्ट रिकॉग्नाइजेज द नेगेटिव impact of hate speech refer to matter to the Law Commission for in-depth examination. Shreya Singh versus Union of India 2015. Supreme Court held that responsible restriction under Article 19 Clause 2 on free speech and expression may be imposed only if it incited violence or led to public disorder. Amish Devgan versus Union of India 2020. Supreme Court highlighted the need to balance the competing interest of free speech and prevent the spread of hatred and communal disharmony. अगला टॉपिक है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991. Why news? The Supreme Court observed that it cannot order a blanket stay on Worship Act pleas. About place of worship, a special provision Act 1991. The Act declares that the religious character of a place of worship shall continue to be the same as it was on August 15, 1947. It says no person shall convert any place of worship of any religious denomination into one of a different denomination or section. It also imposes a positive obligation on the state to maintain the religious character of every place of worship, and it existed at the time of independence. It declares that all suits, appeals, or any other proceeding regarding converting the character of a place of worship which are pending before any court of authority on 15th August 1947 bill abate as soon as the law comes into force. Exemption provided. तो कौन कौन सा था? The dispute site of Ayodhya is exempted from the Act. The Act also does not apply to monuments and sites covered by the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act of 1958. Any dispute that has been finally settled or disposed of, any conversion of any such place effected before such commemoration by executions. Penalty. Section 6 of the Act prescribed a punishment for a maximum of 3 year imprisonment along with a fine for contravening the provision of the Act. अगला है अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़. तो कौन कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट था देख लेते हैं. तो 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Odisha cabinet has proposed for the inclusion of Kui language in the 8th schedule. Schedule 8 of the Indian Constitution. It enlisted the official language of the country and consists of 22 languages currently. 14 languages were originally listed in the Constitution and the rest were added over time. Sindhi was introduced by the 21st Amendment Act of 1967. Konkani, Manipuri and Nepali by the 71st Amendment Act of 1992 and Sinthali, Dogri, Maithili and Bodo by the 92nd Amendment Act of 2023. Schedule 8 benefits.
Support from government to develop recognition from Sahitya Academy and wider translation of its book can be used in assembly and parliamentary debate, can be used in all India competitive exam, RBI to include it in currency note denomination. Ninth schedule of the constitution. It was added to the constitution by first constitutional amendment 1951 under article 13(1)(v). Central and state laws included in ninth schedule cannot be challenged in court for validation of fundamental rights. However, Supreme Court in IR Koleo vs. State of Tamil Nadu 2007 ruled that any law added to the ninth schedule after April 24, 1973 violating fundamental rights can be challenged if it undermined the basic structure as outlined in Article 21 along the Article 14 and 19. अगला टॉपिक था राइट टू साइलेंस. Supreme Court said that all accused have a right to silence and investigator cannot force them to speak up or admit guilty. Right to silence emanates from Article 20 Clause 3 which states that no one can be compelled to be a witness against himself. Protection is limited only to criminal proceedings. Right is not available to a person being interrogated under Custom Act 1962 or Foreign Exchange Management Act 1999. Such the person is not accused of an offence and isn't entitled to a lawyer. In Nandini Sethpati VPL Dani case, Supreme Court stated that compelling a person to answer a question within the limit of police station may result in a violation of Article 20 Clause 3. Reservation for local in private sector. Punjab and Haryana Court quashed Haryana State Employment of Local Candidate Act 2020. Act provided 70% reservation to local in private sector jobs having monthly salary of less than 30,000 rupees. High Court declared it unconstitutional and violative of Part 3 Fundamental Rights of the Constitution of India. It also said that Act violates constitutional morality. Constitutional morality refers to adherence to the fundamental principle of the Constitution. It said state cannot discriminate against the individual on account of the fact that they do not belong to a certain state. Negative discrimination. Other states like Andhra Pradesh 2019 have also enacted similar act. अगला टॉपिक है अफर्मेटिव एक्शन. अफर्मेटिव एक्शन मीन पॉजिटिव एक्शन या डिस्क्रिमिनेशन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन US to counter historical patterns of prejudice against individuals which contain identities, that is black, Hispanic and other minority student. Reservation is a system of affirmative action in India that provide historically disadvantaged group representation in education, employment, government schemes, scholarship and policies. Article 15 Clause 4 and Article 16 Clause 4 allow the government to provide for reservation. Reservation quota fixed at 50% Indira Savai judgment for OBC, SC and ST in both employment and education. Ranganath Mishra Commission. About Ranganath Mishra Commission क्या है तो it is officially known as National Commission for Religious and Linguistic Minorities. It was constituted to look into various issues related to linguistic and religious minorities in the country. Reports by Commission 2007 recommended that scheduled caste status be completely declined from religious and made religious neutral like STs. It has recommended permitting Dalits who converted into Islam and Christianity to avail scheduled caste status. Article 355. Article 355 is a part of emergency provision contained in Part 18 of the Constitution from Article 352 to 360. Article 355 says that it shall be the duty of Union to protect every state against external aggression and internal disturbance, and to ensure that government of every state is carried on in accordance with provision of this Constitution. Right to walk. Punjab has become the first state to implement the right to walk. Right to walk make it mandatory for all road owning agencies,
including the NHAI to provide footpath and cycle track on the road. तो हमारा पहला सेक्शन खत्म हो गया, अब दूसरा सेक्शन शुरू होने वाला है, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर एंड लोकल गवर्नमेंट। उसमें पहला टॉपिक है नो कॉन्फिडेंस मोशन। वाई इन न्यूज़, तो क्यों रहा न्यूज़ में? यूनियन गवर्नमेंट फेस्ड अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। About no confidence motion, the no confidence motion, a legislative resolution introduced in the Lok Sabha that allows the opposition to challenge the government majority. If a no confidence motion is passed, the government of the day will have to resign. The motion of no confidence can only be moved in Lok Sabha. Constitutional article या rules of the business in Lok Sabha. Article 75 clause 3, the constitution of ministers are collectively responsible to the Lok Sabha. Similarly, at the state level, Article 164 clause 2 provided that Council of Ministers shall be collectively responsible to the state legislative assembly. Rule 198 of rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha provides a provision regarding the motion of no confidence. Grounds क्या क्या है? तो a motion of no confidence need not set out any ground on which it is based. Speeches, unless leave is granted by the house to move the motion, no speech is permitted in support of the motion. Repeat motion क्या है? तो after a no confidence motion has been discussed and negated by the house, another no confidence motion cannot be moved in the same session. Usual process for a no confidence motion, तो क्या क्या प्रोसेस है देखते हैं। पहला है हाउस एक्सप्रेसेस इट्स वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर स्पीकर एग्जामिन इफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज इन ऑर्डर। देन द मेंबर हु हैज टेबल्ड द मोशन acts asks for leave of the house to move the motion. Next, speaker then call upon members who are in favor of leave being granted. If not less than 50 member rises, the speaker declare that leave is granted by the house. The motion is then taken up for discussion within 10 days from the date of the grant of leave. अगला टॉपिक है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ लैंडमेकर्स। तो न्यूज़ में क्यों रहा? तो रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट सेट अप अ 7 जज बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ इट्स 1998 जजमेंट इन द पीवी नरसिम्हा राव केस। मोर इन न्यूज़ में क्या है? तो पीवी नरसिम्हा राव केस जजमेंट केम इन द बैकड्रॉप of 1993 झारखंड मुक्ति मोर्चा भिरवरी केस. It upheld legal immunity granted to legislator against criminal prosecution on bribery charge for any speech or vote in parliament as per Article 105 Clause 2 and 192 Clause 2 of the Constitution. About parliamentary privileges, it referred to legal immunity wherein legislators are granted protection against civil or criminal liability for certain action or statements made in course of their legislative duties. If an individual or authority undermines a parliamentary privilege of a member of the House, it is called the breach of privilege. Parliament till now has not made any special law to exhaustively codify all the privileges. Parliament is the sole authority to ascertain if there has been a breach or contempt of the House. No court is entrusted with this power. A member of House can raise a question involving a breach of privileges with the consent of the chairman or speaker. Privileges are based on 5 sources. तो कौन कौन सा सोर्स है? तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल 105, उसमें पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर एंड कमिटीज. आर्टिकल 194, पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर एंड their members and committees. Article 105 Clause 2, no person shall be liable in respect of the publication of any report, paper, votes or proceeding by or under the authority of each house of the parliament. A similar provision exists for members of the legislature of the state under Article 192 Clause 2. Freedom of speech in Parliament. Article 105 Clause 2 states that no member is liable to
any proceeding in any court for anything said or any vote given by him in parliament or its committee. The freedom is subject to the provision of the Constitution. Example, Article 121 restricts the member from discussing judges' conduct and to the rules and procedures of the Parliament under Article 118. Article 122 restricts the court from inquiring into the validity of any proceeding of Parliament on the ground of alleged irregularity of the procedure, law made by Parliament, freedom from arrest. Code of Civil Procedure 1908 provides legislator freedom from arrest in any civil case 40 days before and after the adjournment of the House and also during the session of the House. However, an MP doesn't enjoy any such immunity in a criminal case. Rules of both the House. Privileges based on rules of procedure and precedents. Parliament reserve the right to receive immediate information of the arrest, detention, conviction, imprisonment, and release of a member on a criminal charge or for a criminal offense. Right to exclude strangers. House has the power to right to exclude a stranger from the proceedings. The right is essential for securing free and fair discussion in the House. अदर सोर्स में क्या है तो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. कंटेम्प्ट ऑफ हाउस में क्या आता है तो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस इज डिफरेंट फ्रॉम breach of privileges. It is an act of omission which obstruct or has the tendency to obstruct either House of Parliament or its members, officers in the performance or their function. Parliament is the sole authority to ascertain if there has been a breach or contempt of the House. No court is entrusted with this power. House can commit an offender to custody or prison the contempt for a period limited to the duration of the House session. In case if an MP is found guilty, he can be suspended from the House or face expulsion. Rationale behind parliamentary privileges. तो क्या क्या था तो ensure freedom of expression of the legislator without fear of legal consequences. Ensure attendance of the parliamentary session, maintain the authority dignity of legislator, carry out functions independently and effectively of both the houses without any interference. Parliamentary privileges क्या क्या है तो it is parliamentary standing committee present in both the House of Parliament, consist of 15 members in Lok Sabha and 10 in case of Raj Sabha, nominated by the speaker, chairman in case of Raj Sabha. की फंक्शन क्या है तो इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ हाउस और मेंबर्स आर रिफर्ड टू इट बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउसेस. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लोजन ऑफ लॉ मेकर. तो इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे. इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं. उम्मीद है कि आपको हमारा यह पहल अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो इसे ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. यह पूरा सीरीज़ चलने वाला है तो इसे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो उसे भी देखें. और इसके डिस्क्रिप्शन में वाजीराम एंड रवि के करंट अफेयर का भी पूरा कंपाइलेशन है तो उसे भी देखिए. उसका वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ है और वीडियो कंटिन्यू है उसका भी, तो उसे ज़रूर से ज़रूर देखें. इसे भी देखें. और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल यूपीएससी का हम लोग देने वाले हैं जो आपको शायद ही कहीं एक जगह पर सारा मटेरियल मिल सके. तो बस हमारे साथ जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें और रिवाइज करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें ताकि आपका एग्जाम अच्छा से अच्छा बीते. तो मिलता है आपसे अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन IAS PT 365 सीरीज में. जो लोग पॉलिटी कर रहे हैं अभी इसी का आया तो यही कर रहे हैं जो अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023 का पूरा क्लासरूम स्टडी मटेरियल है. और यह बहुत सारे लोगों का मतलब वेट हो रहा था इसका कि कब आए और कब हम लोग शुरू करें. मेरा भी यही वेट हो रहा था. आज हम लोग यहाँ पे सेकंड टॉपिक में जाने वाले हैं. पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ लॉ मेकर्स में हम लोग चल रहे थे तो आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं. यह सेकंड वीडियो लेक्चर होगा तो उम्मीद है आप लोगों ने पहले का देखा होगा. अगर नहीं देखे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. आप लोग जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए और उसी में आपको विजन वाजीराम एंड रवि का करंट अफेयर का पूरा कंपाइलेशन मिल जाएगा.
वो भी देखिए, उसका भी पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा सीरीज़ है और हम लोगों ने सारे वीडियोस बना रहे हैं और अपलोड भी चल रहा है, रेगुलर चल रहा है। तो आप लोग उसे भी देखिए और उससे भी अपना रिवीजन और मौजूद कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। मगर शुरू करने से पहले बस यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, जिससे कि आपको भी जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम मतलब ये यूपीएससी सीएसई होने से पहले हम लोग काफ़ी सारा मटेरियल अपलोड करने वाले हैं इस पर। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए और अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिए। आइए शुरू करते हैं। आज से हमारा यहाँ टॉपिक होगा आज का एक्सक्लूजन ऑफ लॉ मेकर्स। Why in the news recently Lok Sabha has expelled one of its members accused of accepting gifts and illegal gratification based on the ethics committee report. Explosion of lawmaker in India. It can be done on a constitutional as well as legal rules of the house basis. The constitutional basis of exclusion. An MP found guilty of breach of privileges or contempt of the house can be suspended from the house or face exclusion. A simple majority is needed to pass a motion of exclusion in each house. Further, involvement of ethics committee is not always necessary for exclusion. लीगल बेसिस ऑफ सस्पेंशन एंड एक्सक्लूजन ऑफ एमपीज क्या क्या देख लेते हैं। टू इनहेंस स्मूथ प्रोसीडिंग एंड मेंटेन ऑर्डर, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस हैज़ द पावर टू फोर्स अ मेंबर टू विथड्रॉ फ्रॉम द हाउस। इन केसेस ऑफ एक्सट्रीम misconduct, the house may expel a member to read the house of person who are unfit for membership. यहाँ पे एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा क्या है, तो इट कंसिस्ट of not more than 15 members nominated by the speaker and shall hold office for a term not exceeding 1 year. Functions क्या है, to examine a complaint relating to the unethical condition of a member referred to it by the speaker, make recommendation and formulate a code of conduct for members, suggest amendment to the code of conduct. The first ethics committee of Lok Sabha was set up in 2000 and of Rajya Sabha in 1997. यहाँ पे क्या, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रिलेटेड टू सस्पेंशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा पहले देखते हैं कि लोकसभा में क्या है। तो रूल 373, इट एम्पावर्ड अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू ऑर्डर एन एमपी टू विथड्रॉ ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द डेज सिटिंग। फिर रूल 374 क्या है, तो अलाउज टू सस्पेंड द एमपी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सस्पेंशन। रूल 374 A क्या है, तो brought in 2001 allow the speaker to name an MP who will then automatically stand suspended for 5 days or the remaining part of the session, whichever is less. और उसी तरह से रूल इन राज्यसभा देख लेते क्या है, तो रूल 255, it allows the chairman to direct any member to withdraw immediately from the house for disorderly conduct. Rule 256, house may adopt a motion suspending the member disregarding chair's authority or abusing the rules for a period not exceeding the remainder of the session. Unlike the Lok Sabha, under Rule 374A, the Rajya Sabha cannot suspend its member without passing a motion. Article 122 क्या है of the Constitution says, क्या बोलता है, parliamentary proceeding including those related to exclusion can't be questioned by the judiciary, although the court have intervened in some cases. In the Raja Rampal case 2007, the court upheld the exclusion of Raja Rampal but noted that proceeding tainted by substantial illegality are open to judicial scrutiny. Exclusion and disqualification are not the same. The Constitution provides for both exclusion and disqualification. Under disqualification, member of the parliament cannot contest the election further, while under exclusion he or she can. Disqualification of a lawmaker. RPA 1951, under section 8 clause 4, a lawmaker is disqualified for the period of imprisonment and a further 6 years if sentenced for 2 years or more in prison. 10th schedule of the Constitution provides for the disqualification on ground of defection. Article 102 clause 1 and Article 191 clause 1 for disqualification of a MP and a MLA respectively on grounds of holding an office of profit, being of unsound mind or insolvent or not having valid citizenship. अगला हेडिंग है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो क्या है, वाई न्यूज़
तो महाराष्ट्र स्पीकर डिसमिस्ड ऑल पिटिशन सीकिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंक्लूडेड अंडर द 10th शेड्यूल वाया द 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985. Any question regarding disqualification arising out of defection is to be declared by the presiding officer of the House. Disqualification happens if a member voluntarily give up his party membership or votes abstain to vote in the House contrary to the direction issued by his political party, and such act has not been condemned by the party within 15 days. An independent member becomes disqualified if he or she joins any political party after such an election. A nominated member becomes disqualified if she or he joins any political party after the expiry of 6 months from the date on which he has taken a seat. Exception क्या है, तो law allows a political party to merge with or into another party provided that 2/3 of its total legislators are in favor. If a person is elected as a speaker of Lok Sabha, deputy speaker and deputy chairman of Rajya Sabha, then he could resign from his party and rejoin the party once he or she dims the post. Presently, the law does not provide a time limit within which the presiding officer have to decide on the anti-defection case. विप क्या, तो विप देख लेते हैं. रूल 2 of the anti-defection law puts the party member into a bracket of obedience to the party whip and policies. In parliament parlances, a whip may refers to क्या है, तो a written order for party member to follow a certain direction and a designated official to the party who is authorized to issue such a direction. The term originates from the British practice of whipping in. Lawmaker is follow the party line. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू 10th शेड्यूल क्या क्या, तो देख लेते हैं. क्योटो होलोहल वर्सेज जिंजुलू 1992. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्पीकर्स डिसीजन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. और उसी तरह से केशम मेगा चंद्र सिंह 2020 केस, सुप्रीम court ruled that disqualification petition under the 10th schedule should normally be decided within a period of 3 months from the date of their filing. Supreme Court also noted the issue of partisan behavior on the part of speakers due to their political allegiance and suggested a permanent tribunal to decide case under 10th schedule. अगला वाला टॉपिक है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. तो क्या है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, वाई न्यूज़ में क्यों आया, देख लेते हैं. A recent analysis showing that the number of ordinances issued by the president has dropped since 2019. In 2022, for the first time in 59 years, no ordinances were promulgated. Ordinance making power of the president and governor. Ordinances are temporary law which can be issued by the president when parliament is not in session. Power to promulgate the ordinance can be traced from Indian Council Act of 1861, the Government of India Act GOI Act 1909 and the Government of India Act of 1935. The ordinance is listed under Article 123, power of President to promulgate ordinance during recess of Parliament, and Article 213, power of Governor to promulgate ordinance during recess of legislature. These promulgated ordinances have the same force and effect as an act of legislature, but these acts are likely in temporary nature. An ordinance ceases to operate at the expiration of 6 weeks from the date when the next session starts. If the two houses start their session on different dates, the latter of the date will be considered. The ordinance may lapse earlier if the president or governor withdraw it or if both houses passes a resolution disapproving it. In case of a state legislature, resolution disapproving it is passed by Legislative Assembly and agreed to by the Legislative Council if any. Ordinance can only be issued on matter on which Parliament or legislature can make laws and are subject to same limitation as Parliament legislature to make laws. However, the governor of a state cannot make an ordinance without the reference of the president in the following case. तो कौन कौन सा केस है देख लेते हैं. पहला, if bills containing similar provision would have required the prior sanction of the president for introduction in the assembly.
दूसरा, इफ गवर्नर वुड हैव डीम्ड इट नेसेसरी टू रिजर्व अ बिल कंटेनिंग सिमिलर प्रोविजन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और तीसरा, इफ एन एक्ट ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर कंटेनिंग द सेम प्रोविजन would have been invalid without receiving the president assent। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस क्या क्या देख लेते हैं। तो आरपी कॉपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970, इसमें बोला था एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट प्रेसिडेंट्स डिसीजन कुड बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ immediate action was not required and the ordinance had been passed primarily to bypass debate and discussion in the legislature। DC Wadhwa versus State of Bihar 1987, court held that legislative power of executive to promulgate ordinance is to be used in exceptional circumstances and not as a substantiate for law making power of the legislator। अगला है कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1994, court held that the satisfaction of the president under article 123 and governor under article 213 while issuing an ordinance is not immune from judicial review। अगला टॉपिक है सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। न्यूज़ में क्यों रहा? तो एज द पार्लियामेंट कंप्लीट 75 years द पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट हैव बीन द custodian of procedure, precedent and legislative knowledge of the two houses। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? तो आर्टिकल 98, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव ए सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ। पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द recruitment and the condition of service of person appointed to the secretariat staff of either house। However, so far no such law has been passed। It also allows the creation of posts common to both the House of Parliament। Article 187 makes similar provision for the Secretariat of State Legislature, Council of a State Secretariat and Parliament Secretariat for House of the People were set up when both houses came into existence in 1952। Their names were changed in 1954 to Rajya Sabha Secretariat and Lok Sabha Secretariat respectively। The Secretariat of both houses has been divided into 10 service on a function basis like legislative, executive, administrative, verbatim, reporting service, etc। Speaker and chairman can create new posts in respective secretariat। However, the post in class 1 or class 2 prior consultation with the Union Ministry of Finance is mandatory। Secretary General of both houses hold rank equivalent to that of Cabinet Secretary। However, in the table of precedence, the Cabinet Secretary is placed at the 11th position, whereas the Secretary Lok Sabha या Rajya Sabha are placed at the 23rd position। फंक्शन ऑफ सेक्रेटेरिएट क्या है देख लेते हैं। तो सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड अदर अलाउंस, सर्विसिंग वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटी। सेक्रेटरी जनरल एड एंड एडवाइज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिपेयर रिसर्च एंड रेफरेंस मटेरियल एंड ब्रिंग आउट वेरियस पब्लिकेशंस, प्रिपेयर एंड पब्लिश अ रिकॉर्ड ऑफ द डे टू डे प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। स्ट्रक्चर ऑफ सेक्रेटेरिएट क्या है? तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट देखते हैं पहले। स्पीकर लोकसभा वेस्टेड विथ अल्टीमेट गाइडेंस एंड कंट्रोल ओवर द सेक्रेटेरिएट। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है? सेक्रेटरी जनरल। रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगा? तो गवर्नड बाय द लोकसभा सेक्रेटेरिएट। रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1955 प्रोमulgated बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद स्पीकर। उसी तरह से राज्यसभा सेक्रेटेरिएट देखते हैं। तो चेयरमैन राज्यसभा का वेस्टेड विथ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द सेक्रेटरीट। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है? तो सेक्रेटरी जनरल। रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस गवर्नड बाय द राज्यसभा सेक्रेटेरिएट। रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 1957 प्रोमulgated बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ चेयरमैन, सिमिलर टू लोकसभा। अगला टॉपिक है हमारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। न्यूज़ में क्यों था? तो द ईयर 2023 marks the 30th anniversary of the 73rd and 74th Amendment of Indian Constitution। Democratic decentralization in India, it refers to the devolution of power, resource and decision-making authority from the central government to the local government, such as panchayat and municipalities। The 73rd and 74th Constitutional Amendment Act of 1992 that came into force in 1993 introduced democratic decentralization in India। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 क्या था?
तो पंचायती राज institution was constitutionalized through the act. The act has added a new part 9 to the Constitution of India and consists of provision from Article 243 to 243O. It added a new 11th schedule to the Constitution that contained 29 functional items of the Panchayat. 74th Constitutional Amendment Act 1992 क्या था? तो urban local government were centralized, constitutionalized. It added Part 9A and consists of provision from Article 243P to 243ZG. It also added the 12th schedule to the Constitution that contained 18 functional items of municipalities. Step taken to strengthen RPIs in India. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA for developing and strengthening the capacities of RPIs. E-Gram Swaraj, a user-friendly web-based portal that unifies the planning, accounting and monitoring function of Gram Panchayat. People's Gram Campaign PPC, सबकी योजना सभा विकास. To draw up Gram Panchayat Development Plan GPDPs. Backward Region Grant Fund BRFGF. United funds are given for meeting critical gap in local infrastructure and development in some identified backward district. National Institute for Rural Development and Panchayati Raj, an autonomous organization under the Ministry of Rural Development for capacity building of rural development functionaries, local elected representative, banker, NGOs, etc. National Panchayat Award क्या है? तो यूज अंडर दिस बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत आर अवॉर्डेड बेस्ड ऑन वेरियस क्रिटेरिया एंड इंडिकेटर्स. स्वामित्व स्कीम, तो ये क्या है? तो प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ऑनर एंड इश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड टू द प्रॉपर्टी ऑनर. इंपॉर्टेंट पंचायती राज कमेटी कौन कौन सा? तो देख लेते. पहला है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957. दूसरा अशोक मेहता कमेटी 1977 1978. इसी तरह से अगला है CH हनुमंता राव वर्किंग ग्रुप 1983. फिर है GVK राव कमेटी 1985. अगला है LN सिंघवी कमेटी 1986 और फिर है तुंगन कमेटी 1988. नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRIS, फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. तो न्यूज़ में क्यों रहा? तो रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI रिलीज्ड इट्स रिपोर्ट टाइटल्ड Finances of Panchayati Raj Institution. The report discusses the physical position of PRIs for the year 2020, 21 to 22, 23. Constitutional provision to financial empowerment of Panchayat. क्या क्या है? तो Article 243H provides to finance for the Panchayats by securing authorization from state legislator for grant in aid to the Panchayats for the consolidated fund of the state. It empowered panchayats to impose, collect and allocate taxes, duties, tolls and fees. Article 243I, setting up a state finance commission FCs every 5 years to review the financial position of panchayats and make recommendation to improve their financial position. Article 280 clause 3 subclause BB mandates Central Finance Commission to recommend measures needed to augment the consolidated fund of the state and supplement panchayat resources. Sources of finance for PRIs. Internal या own source of revenue. Tax revenue for property tax on land other than agricultural land or building or both. Taxes and on duties and commodities. Service tax, tax on profession, trade, etc. Non-tax revenue from market fee on persons exporting goods for sale in panchayat areas, fee in registration of cattle sold within the panchayat area, etc. अगला ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम सेंट्रल फाइनेंस कमीशन CFCs एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन SFC. सबसे पहला है टाइड ग्रांट्स आर मार्क्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस और सेक्टर लाइक सैनिटेशन, एजुकेशन, etc. United grants, general purpose grants. These are provided without specific condition or restriction and can be utilized for local need and priorities. Performance-based grants, additional fund granted to PRIs based on recommendation of CFCs and specific performance criteria. अगला special category grants. These grants are additional finance support designed to address unique challenge or
particular needs of PRIs in a specific region or context. अगला other sources, transfer from central government and state government under different schemes like मनरेगा, PMI, rulers, संसद आदर्श ग्राम योजना etc, grants for international bodies like World Bank etc. अगला कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर अर्बन लोकल बॉडीज ULBs. तो न्यूज़ में क्यों रहा? तो रिसेंटली द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन CBC इन कोलैबोरेशन विथ MOHUA organized a national workshop on capacity building of ULBs to foster a unified approach to capacity building ULBs across India. More on news. The workshop marked the launch of 3 key initiatives, that is annual capacity building plan ACBP to enhance the capacities of MOHUA, ACBP for 6 pilot ULBs. कौन कौन सा कहाँ तो अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूर, राजकोट, नागपुर एंड पुणे. Comprehensive toolkit for preparing capacity building plan for ULBs for providing valuable resource to facilitate the growth and development of ULBs. About urban local bodies. ULBs are small local bodies that administer or govern a city or a town of a specified population. Urban governance. Local government is part of a state list entry number 5 under the Constitution. Thus, the administrative framework and regulation of ULBs varies across states. Constitution 74th Amendment Act 1992 formally recognized urban local government as the third tier of government. The act provided for the establishment of 3 types of ULBs. पहला है नगर पंचायत for a transitional area, दूसरा है municipal council for a smaller urban area and तीसरा है municipal cooperatives for a larger urban area. अब देख लेते कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या है. CBC. तो जेनेसिस क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू गैजेट ऑफ इंडिया इन 2021. अबाउट. तो एस्टैब्लिश एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी विथ कंप्लीट एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल अथॉरिटी. It is key component of National Program for Civil Services Capacity Building NPCSCB Mission Karmyogi, served as Department of Personnel and Training. Purpose क्या है? तो to build credibility and shape a uniform approach to capacity building on a collaborative and co-sharing basis. Composition क्या है? तो a chairperson and 2 members supported by an internal secretariat headed by secretary in the grant of joint secretary. फंक्शन क्या है? तो कोऑर्डिनेट विद डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर इवॉल्विंग ए हारमोनियस डिसोल्यूट अप्रोच टू इम्प्रूव कैपेसिटी एंड बिल्ड शेयर्ड रिसोर्सेज. प्रिपेयर एनुअल HR रिपोर्ट ऑन हेल्थ ऑफ सिविल सर्विसेज along the target achieved. Undertake audit of human resource available in government and assess outcome of capacity building efforts. Measures taken for capacity building of ULBs. तो क्या है मेजर्स देख लेते हैं. नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन लॉन्च्ड इन 2021 बाय MOHUA. इट फोकसेस ऑन सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल revolution in ULBs in India. It aims to create a shared digital infrastructure working across 3 pillars of people, processes and platform to provide a framework for digital governance in the country. National Institute of Urban Affairs NIUA has been appointed to anchor this mission. Established in 1976, NIUA is a premier institute for research, training and information dissemination in urban development and management. Municipal bonds क्या है? तो these are financial institutions that municipal corporation and other associated bodies in India issued to raise fund. अगला हेडिंग है पंचायत. एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996. न्यूज़ में क्यों था? तो रिसेंटली झारखंड इश्यूड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट पेसा एक्ट ड्राफ्ट रूल फॉर पब्लिक कंसल्टेशन अबाउट पेसा एक्ट 1996. तो क्या है देख लेते हैं. बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द दिलीप सिंह बुरा कमिटी, द पेसा एक्ट वॉज इनैक्टेड इन 1996 फॉर ट्रैवल एम्पावरमेंट एंड टू ब्रिंग देम इन टू द मेन स्ट्रीम. It provides for the extension of provision of Part 9 of the Constitution relating to Panchayat to scheduled area of 10 states under Article 244, Clause 1, read with Schedule 5 with certain modification and expectations.
PESA empower the state legislature to frame laws in this regard. Presently 10 स्टेट वाया कौन कौन सा, तो देख लेते हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना have fifth schedule area in their respective states. 8 states except Jharkhand and Odisha have framed and notified their state PESA rules under the respective state Panchayati Raj Act. The Ministry of Panchayati Raj is the nodal ministry for the implementation of provision of PESA in the state. PESA Act is called a constitutional within the constitution. The major power of Gram Sabha under PESA देख लेते हैं कौन कौन सा है, तो पावर ऑफ मैंडेटरी consultation in a matter of land acquisition, prevent alienation of land and restore alienated land, to control institutions and functionaries in all social sector and local plans, to manage minor water bodies, ownership of minor forest produce, regulate and restrict sale consumption of liquor, manage village market, control money leading to scheduled tribes, resettlement and rehabilitation, and prospecting license, mining, lease for minor minerals. अदर फीचर ऑफ पेसा एक्ट 1996, तो उसमें क्या क्या है तो देख लेते हैं. कंफर्मिटी विथ कस्टमरी लॉ, स्टेट लेजिस्लेशन ऑफ पंचायत शैल बी इन कंफर्टिविटी with customary law, social and religious practices and traditional management practices of community resources. Gram Sabha, every village shall have a Gram Sabha GS consisting of persons whose name are included in electoral roll for panchayat at village level. अगला रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राम सभा, तो क्या है देख लेते हैं. तो ग्राम सभा है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अप्रूविंग ऑल डेवलपमेंट वर्क. इफ village identify beneficiaries, issue certificates of utilization of fund, power to control in institution and functionaries in all social sector and local plans. Every GS to safeguard and preserve tradition and custom of people, their culture identity, community resource and the customary mode of dispute resource. Reservation क्या था, तो every panchayat to have reservation of seats in proportion to community population, minimum of 150% with chairperson of panchayats at all level to be reserved for STs. फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल क्या है तो देख लेते हैं आगे करके. तो पहले देखते हैं फिफ्थ शेड्यूल के बारे में. तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, तो आर्टिकल 244 क्लॉज 1 प्रोवाइड फॉर द फिफ्थ शेड्यूल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट एक्सेप्ट स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. काउंसिल क्रिएशन क्या है, तो बाई एक्ट ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटर. ऑटोनॉमी क्या है, तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996. सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा फॉर पीपुल लिविंग इन फिफ्थ शेड्यूल एरिया. फिफ्थ शेड्यूल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हैज़ ओनली एडवाइजरी पावर. सिक्स शेड्यूल में देखते हैं तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, तो आर्टिकल 244 क्लॉज 2 and 275 clause 1 provide for administration of the tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Council creation क्या है, तो autonomous district council ADC provided by constitution. Autonomy क्या है, तो greater autonomy compared to fifth schedule and ADCs have much wider power than tribal advisory council. अदर important news में क्या क्या देख लेते हैं. पहला है panel of vice chairpersons VCs. Rajya Sabha chairman constituted an all-women panel for VCs in Rajya Sabha. Under the rules of Rajya Sabha, the chairman nominates from among the members of a panel of VCs. Any one of them can preside over the house in the absence of chairman or deputy chairman. However, they cannot preside over the house when the seat of chairman or deputy chairman is vacant. In this case, president appoints a member of the house to perform the chairman's duty. He or she have the same power as the chairman when presiding and holding office unit until a new panel of VCs is nominated. Parliament sessions. The Constitution of India did not mention the term special session. The term sometimes refers to sessions government
has convened for specific occasions. Article 83 mandates that Parliament should meet at least twice a year. The gap between two sessions should not exceed 6 months. By convention, Parliament meet for 3 sessions in a year. However, the provision does not prevent the summoning of Parliament more often, and these extra sessions are referred to as special sessions. The Cabinet Committee on Parliamentary Affairs determines the date and duration of parliamentary sessions. The President then summons MPs for the session. अगला immunity for President. Supreme Court SC held that government cannot claim immunity for application of law to a contract merely because one of the parties to it is the President. SC said Article 299 contract made by the Union of State in name of President or Governor does not give the government power to break the statutory law. Article 361 of the Indian Constitution grant immunity or protection to the President and the Governor of the country. President and the Governor are immune from court scrutiny for their action and duties in office. Conduct of the President can be reviewed only if either House of Parliament designate court or tribunal or any other body to investigate the charges under Article 61. Rule 176 and Rule 267. According to the rules of procedure and conduct of business in the Council of State, Rule 176 allows for a short duration discussion, not exceeding 2.5 hours on a particular issue. Under Rule 276, a Rajya Sabha MP has the special power to suspend the pre-decided agenda of the House with the approval of the chairman. अगला adjournment motion moved in the Lok Sabha for discussing a definite matter of urgent public importance with the speaker consent. It needs the support of 50 members to be admitted. It involves an element of censure against the government, and hence Rajya Sabha is not permitted to make use of this device. Discussion on an appointment motion should last for not less than 2 hours and 30 minutes. अगला subordinate legislation और delegate legislation. Committee on Subordinate Legislation of Rajya Sabha released delay in framing of rules under various acts by the Ministry's report. Scheduled legislation is the legislation made by an authority subordinate to the legislator. Most enactment delegate the power for making rules, regulations, bylaws, etc. to subordinate authorities like the executive. Need for subordinate legislation. Legislators have limitations of time. Thus, subordinate legislation is practical necessity. Enable experts and technocrats to provide detail with the framework of law. Committee on Subordinate Legislation, Rajya Sabha, constituted under the Rule 204 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Council of State. Mandate क्या है तो scrutinize and report the House whether the power of subordinate legislation delegated by Parliament have been properly exercised. अगला Parliament security breach. Recently, Parliament security was breached where accused entered Lok Sabha on Victor's Pass and releases color gas canister emitting yellow smoke, restricted across to Parliament. Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha deals with admission, withdrawal and removal of stranger. It specifies that a speaker, whenever think fit, may order the withdrawal of stranger from any part of the house. Visitor to Parliament need security clearance from parliamentarians. अगला सरपंच पति. Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj recommended training and capacity building to curb prevalent concept like Sarpanch Pati or Pradhan Pati. It refers to practice of husband act as proxy for elected women and wield the actual political decision making power. Women reservation in Panchayati Raj institution PRIs.
73rd Constitutional Amendment Act of 1992, one-third of seat of PRIs and one-third officer of chairperson at all level of PRIs covered by Part 9 are reserved for women. Article 243D. Many states like Bihar, Kerala, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, etc. have made legal provision for 50% reservation of women among members and Sarpanch. As per Women and Male in India 2022 report, over of the over 31.8 lakh ERs, nearly 46 over 14.5 lakh were women. अगला है कोटा टू बैकवर्ड क्लासेस इन अर्बन लोकल बॉडीज ULBs. Haryana Cabinet has accepted State Backward Classes Commission's report on proportion of reservation of backward class Block A category in ULB. Article 243T, Clause 6. There will be no bar or state legislator for making provision for reservation of seats in any municipality or office of chairperson in municipalities in favor of backward class of citizen. ट्रिपल टेस्ट कंडीशंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज इन लोकल बॉडीज के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010. उसमें 3 चीज़ हुआ था. क्या हुआ? पहला, सेट अप डेडिकेटेड कमीशन टू कंडक्ट ए रिगोरस empirical inquiry in nature and implications of backwardness in local bodies. दूसरा है specify the proportion of reserved required in local bodies in light of commission's proposal. तीसरा है ensure reservation for scheduled caste, scheduled tribes, OBC taken together does not exceed an aggregate of 50% of total seats. अगला हमारा तीसरा सेक्शन है सेंटर स्टेट रिलेशन. उसमें पहला है रोल ऑफ गवर्नर. तो गवर्नर का रोल क्या है? तो न्यूज़ में ये क्यों रहा? तो पहले रिसेंटली केरला, तमिलनाडु एंड पंजाब मूव द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर ओवर द पेंडिंग बिल. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग बिल बिफोर गवर्नर क्या है? तो आर्टिकल 200. assent the governor is necessary. Assent of the governor is necessary for a bill to become a law. In this regard, the governor has been given some options. क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं. तो गवर्नर्स ओपिनियन और स्टेटस ऑफ द बिल. गिव असेंट टू द बिल देन बिल बिकम अ लॉ. विड्रॉ द असेंट देन बिल फेल्स टू बिकम अ लॉ. तीसरा है रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेटर. इफ द स्टेट लेजिस्लेटर passes the bill in its original shape or in a modified form, the governor has to give the assent to re-enacted bill. और दूसरा क्या है? the constitution does not lay down any time limit within which the governor is required to return the bill for reconsideration if not insist on as soon as possible. और चौथा क्या है? reserve the bill for the consideration of the president. Any bill which is in the option of the governor would, if it become law, so derogate from the power of the high court as to endanger the position which that court is by this constitution designated to fill. Reserving bill for president. Article 201. President can either give his assent or withdraw the assent. इसमें देखते हैं और क्या है? तो प्रेसिडेंट में डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू स्टेट लेजिस्लेटर with his or her message. Such bill, if re-enacted by the state legislator with or without amendment, is presented again to the president. यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू गवर्नर और जुडिशियल प्रोविजन रिलेटेड टू गवर्नर. तो पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू गवर्नर. आर्टिकल 153. There shall be a governor for each state. Article 154. The executive power of the state shall be vested in the governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him as per the Constitution. Article 155. Governor of a state shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal. Article 161. Governor shall have the power to grant, pardon, deprive, etc. Article 163. There shall be Council of Ministers (COM) with the Chief Minister as at the head to aid and advise the governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under the Constitution required to exercise his function or any of them in his discretion. Article 164. The governor appoints Chief Minister and other ministers.
Article 213, Governor may promulgate the ordinance under certain circumstances. Article 217, Governor is consulted for appointment of judges of High Court. उसी तरह से देखते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू गवर्नर क्या क्या, तो देख लेते हैं। तो पहला है शमशेर सिंह केस 1974. Supreme Court held that the governor does not exercise discretionary power while withholding assent or returning a bill to the state legislature. Next is Nawam Rabia case 2016. If a governor exercises his discretion beyond his jurisdiction or power, it would fall under the subject matter of judicial review. फिर से नवाम राबिया केस 2016 फिर से उसमें है if a governor exercise his discretion beyond his jurisdiction or power, it would fall under the subject matter of judicial review. वो रिपीट हो गया, सेम है। अगला रिसेंट जजमेंट कौन कौन सा, तो स्टेट ऑफ पंजाब केस 2023. If a governor decides to withdraw assent to a bill, then he or she has to return the bill in the legislature for recommendation. Such a bill cannot be kept with the governor indefinitely. Vice Chancellor case 2023. Governor acting as a university chancellor are not bound by the aid and advice of the COM. Tamil Nadu Governor case 2023. The governor cannot refuse the bill to the president after the assembly has reenacted the bill following the governor's withdrawal of assent. अगला है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. तो ये न्यूज़ में क्यों रहा, तो प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अंडरलाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया. अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, तो देखते हैं. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज द हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एंड सो नाइदर इज above the other. It envisages the nation and state agencies undertake government functions jointly rather than execute exclusively. Constitutional provision to promote cooperative federalism in India. तो क्या क्या है, तो 7th schedule which demarcates central, state and concurrent list based on the principle of subsidiarity. All India service under Article 312. Integrated judicial system to enforce both state as well as central law. Interstate Council under Article 263 to discuss and investigate the subject of common interest between the center and the state. Article 261 provides that full faith and credit shall be given throughout the territory of India to all the public act, records and judicial proceeding of union and every state. अगला zonal council were established as statutory body under the State Reorganization Act of 1956 to ensure coordination. Article 280 Finance Commission for recommending the distribution of financial resource between the union and the state. Article 279A GST Council involving members from union and state responsible for deciding the rates of GST and the modalities of its implementation. अगला स्टेप सेकेंड टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया. क्या क्या है, the share of states in central tax revenue has been increased from 32% to 42% after the recommendation of 14th Finance Commission. Restructuring of centrally sponsored scheme. अगला फाइनेंशियल सेक्टर बेल आउट प्रोग्राम अंडर उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय स्कीम. अगला नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग नीति आयोग act as a platform to promote cooperative federalism. Various steps taken by नीति आयोग are. पहला है सब ग्रुप्स ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑन सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. दूसरा है लॉन्चिंग ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट. तीसरा है फ्रेमिंग मॉडल लॉज फॉर लैंड लीजिंग एंड एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स. नेक्स्ट इज एरिया स्पेसिफिक इंटरवेंशंस फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमाचल स्टेट एंड आइलैंड डेवलपमेंट. Next is subordinate action for transferring human capital. 7th program to initiate transformation in the education and health sector in India. Our next topic is interstate border dispute, जिसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे. इसे हम यहीं पे समाप्त करते हैं. उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे.
आपको हमारी यह पहल कैसी लगी, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता होती है और इसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के यूपीएससी एग्जाम देने वाले हैं, उन तक इसे जरूर पहुंचा ताकि उसका रिवीजन अच्छे से हो सके। और इसमें हम लोग सारा का सारा बुक करने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, बस हमारे साथ बने रहें, पढ़ते रहें और रिवीजन करते हैं। मिलता है आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन आईएएस के पीटी 365 सीरीज़ में, जिसमें आज हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं और यह कंटिन्यू सेशन रहेगा। पहले भी इसके 2 वीडियो आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए उसे चेक कीजिए। और इसमें हम लोग पूरा का पूरा ये बुक करने वाले हैं, जो कि काफ़ी समय से हम लोग का इंतजार था इस बुक का, और ये फाइनली आ गया और अब इसे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लोग अगर इसके पहले का वीडियोस लेक्चर नहीं देखे तो उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, उसे जाइए आप लोग उसे ज़रूर देखिए। और इसी के साथ हम लोग विजन आईएएस ये वाजीराम एंड रवि का करंट अफेयर कर रहे हैं, उसका भी पूरा कंपाइलेशन बुक आया हुआ है, उसे भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसे भी आप लोग अगर नहीं देखें तो उसे भी देखिए। और मैं आपसे ये दावा करता हूँ कि इस चैनल पे जितना हो सके उतना, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यूपीएससी मटेरियल मिलेगा। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं, ताकि उन्हें भी करंट अफेयर में बहुत अच्छा हेल्प मिल सके और वो भी करंट अफेयर में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। बस आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। आज का हमारा यहाँ से टॉपिक शुरू होगा इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो न्यूज़ में ये क्यों था, तो असम एंड अरुणाचल प्रदेश साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU टू एंड ए डिकेड लॉन्ग इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। मेथड टू रिसॉल्व डिस्प्यूट अमंग स्टेट्स क्या है, तो जुडिशियल रिड्रेसल आर्टिकल 131 प्रोवाइड्स दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल टू the exclusion of any other court have original jurisdiction in any dispute। इसमें क्या है, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, और बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड any state or states on one side and one or more the other states on the other, or between two or more states। इंटरस्टेट काउंसिल क्या है, तो आर्टिकल 263 गिव पावर टू द प्रेसिडेंट to set up an interstate council for the resolution of dispute between states। It have the duty of, इसका क्या क्या ड्यूटी है, तो inquiring into the adversing upon disputes which may have arisen between states, or investigating and discussing subject in which some or all the states or the union have a common interest, or making recommendations on such subject along with recommendation for the better coordination of policy and action to that subject। अगला zonal council, they are established by the State Reorganization Act of 1956 and have an advisory role to promoting cooperation and coordination between states and union territory at the center। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ स्टेट्स में बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो आइए हम लोग एक एक करके सब देख लेते हैं। तो पहला है हरियाणा हिमाचल प्रदेश ओवर परवाऊं रीजन एंड पंचकुला। फिर दूसरा है महाराष्ट्र कर्नाटका रीजन over Belgaum district with a large Marathi speaking population। It has part of Bombay Presidency before coming under Karnataka in 1956। तीसरा हिमाचल प्रदेश लद्दाख over सारचू lying along Leh Manali highway। चौथा उड़ीसा वेस्ट बंगाल has issues in the past along its mainland boundaries and over Kanika Sands Island in the Bay of Bengal। पांचवा है हरियाणा पंजाब ओवर चंडीगढ़। फिर छठा है कर्नाटका केरल ओवर कजारगोंड पार्ट ऑफ केरला विथ मेनी कन्नड़ स्पीकिंग पीपुल। और सातवां है गुजरात राजस्थान ओवर मांगद हिल्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं जोनल काउंसिल क्या है। चेयरपर्सन कौन है, तो यूनियन होम मिनिस्टर। 5 जोनल काउंसिल्स कौन कौन सा है, तो नॉर्थन में हो जाएगा हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान दिल्ली चंडीगढ़ लद्दाख। सेंट्रल में हो जाएगा छत्तीसगढ़ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। ईस्टर्न में हो जाएगा बिहार झारखंड उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। वेस्टर्न में हो जाएगा गोवा गुजरात महाराष्ट्र दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। सदर्न में हो जाएगा आंध्र प्रदेश कर्नाटका केरल तमिलनाडु तेलंगाना अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी। फिर अगला टॉपिक है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो वाटर डिस्प्यूट क्या है, काफ़ी समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं। देखिए न्यूज़ में ये क्यों रहा, recently the union cabinet approved the
terms of reference to Krishna Water Dispute Tribunal 2 KWDT2 under the Interstate River Water Dispute ISRWD Act 1956. Also, the Supreme Court criticized the Punjab government for its slow process in constructing the Satluj Yamuna Link SYL canal mechanism to deal with interstate water dispute under 7th schedule of constitution. State list में क्या है तो entry 7 water, that is water supplies, irrigation and canal drainage and embankment, water storage etc, subject to the provision of entry 56 of list 1. Article 226 parliament by law may provide for the adjudication of any dispute with respect to the use, distribution or control over interstate river water or river valley. Accordingly, Parliament has enacted 2 laws. कौन सा? तो पहला है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ISWD Act 1956. State government may request the central government to refer the dispute to a tribunal for adjudication. और दूसरा रिवर बोर्ड एक्ट 1956 सेटिंग अप ऑफ river board by the central government for the regulation and development of interstate river and river valley. Article 226 deters the Supreme Court for adjudicating in interstate river water dispute. However, Article 136 empowers the Supreme Court to hear appeal against the tribunal order. नेशनल वाटर पॉलिसी 2016 क्या है तो एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, इनइक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड लैक ऑफ अ यूनिफाइड preservative in water use and management. Union list under entry 56 regulation and development of interstate river water and river valleys. In the context of interstate river water sharing, Supreme Court had earlier referred to international rules like कौन सा तो Helsinki Rule of 1966 recognize, establish equitable use of water by each basin state taking into consideration the socio-economic need and availability of resource. अगला है Campion Consolidation of ILA Rule 1966 to 1999 advocates the inclusion of water of an aquifer, that is underground water or fossil water intercepted by the boundary between 2 or more states while determining the share of basin state over an interstate river. अब यहाँ पे अबाउट SYL कैनाल क्या है, सतलज यमुना लिंक कैनाल प्लान इन 1966 इज ए 214 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल फॉर शेयरिंग वाटर ऑफ रिवर एंड ब्यास रावी एंड ब्यास रिवर बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब, ऑफ विच 122 किलोमीटर वाज टू बी इन पंजाब एंड 92 किलोमीटर इन हरियाणा. हरियाणा completed its stretch of SYL canal in 1980 while Punjab keep citing Ripon principle and the non-availability of its water. Ripon principle states that the owner of land adjacent to the water body have the right to use water. About Krishna water dispute तो देख लेते क्या है तो in 1969 Krishna water dispute tribunal 1 KWDT was set up under the ISRWD Act 1956 and KWD2 was instituted in 2004. KWDT2 will distribute the Krishna water allocated to undivided Andhra Pradesh between Telangana and Andhra Pradesh. Krishna is an eastern flowing river that originates at Mahabaleshwar in Maharashtra and merge with the Bay of Bengal, flowing through Maharashtra, Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh. In 2014, after the creation of Telangana, Andhra Pradesh asked to include Telangana as a separate part at KWDT. However, Maharashtra and Karnataka argues that Telangana should be allocated water from Andhra Pradesh share as it was created from later bifurcation. यहाँ पे देख लेते हैं ट्रिब्यूनल सेटअप फॉर अंडर ISRWD एक्ट 1956. कौन कौन सा ट्रिब्यूनल है तो यहाँ पे है रवि एंड ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल स्टेटेड कंसर्न्ड पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. अगला नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल स्टेट्स कंसर्न्ड राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. आप लोग यहाँ रिवर चैनल देख लीजिएगा, अच्छे से ध्यान में रखिएगा कौन सा किधर है. अगला है महादई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल स्टेट्स कंसर्न कौन कौन सा गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 स्टेट कंसर्न कौन है तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र. वसुधरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल स्टेट कंसर्न क्या है आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा.
गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल स्टेट कंसर्न कौन है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। काबरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 स्टेट कंसर्न कौन है? तो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी। हमारा अगला टॉपिक जुडिशरी से रिलेटेड है। तो जुडिशरी जो भी न्यूज़ में होगा वो यहाँ पे है, आइए देख लेते हैं एक एक करके। पहला जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो न्यूज़ में क्यों रहा ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट? तो सुप्रीम कोर्ट वाइल हियरिंग ए कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट इनऑर्डिनेट डिले बाय द सेंटर इन जजेस अपॉइंटमेंट said that appointment proposal can't remain in limbo and the government must either notify those appointments or send them back, citing specific objections. Appointment of judge in higher judiciary तो कैसे होता है देख लेते हैं। तो judges are appointed through a collegium. Article 124 clause 2 and 217 governs the appointment of judges in Supreme Court and High Court respectively. It has evolved through judgment of Supreme Court refers to as 3 judges case and pronounced in 1981, 1993 and 1998. Supreme Court Collegium includes CJI and 4 other senior most judges of the court at that time. Collegium for the appointment of judges to the High Court is led by the CJI and 2 other senior most judges of the Supreme Court. इसमें क्या होगा? तो initiation of proposal for appointment of judge of the concerned High Court vested with the High Court Collegium HCC, who send a view to the Supreme Court Collegium. HCC consists of Chief Justice of High Court and 2 senior most judges. Role of government in appointment of judges. Under memorandum of procedure, government can get an inquiry conducted by Intelligence Bureau for candidates recommended. Government can also raise objection and seek clarification regarding collegium choice. However, if the collegium retreats same name, government is bound to appoint them as judge. अब यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट इन हायर जुडिशरी और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट इन हायर जुडिशरी। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं। तो आर्टिकल 114 क्लॉज 2 सुप्रीम कोर्ट जज शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन with such of the judges of the Supreme Court and of the High Court as the President may deem necessary. In the case of appointment of a judge other than the Chief Justice of India shall always be consulted. Article 217. High Court judge shall be appointed by the President and after the consultation with the Chief Justice of India, the Governor of State, and in the case of appointment of a judge other than the Chief Justice of the High Court. फिर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट इन हायर जुडिशरी क्या है? तो फर्स्ट जज केस 1981 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय द CJI टू द प्रेसिडेंट कैन बी रिफर्ड फॉर cogent reasons, thereby giving greater say to executive. Second judge case 1993 Supreme Court advocates on record association of via VOI. It led to the creation of the collegium system. The Supreme Court said that the CJI should be given the prominent role in appointment. Third judge case 1998 related to the meaning of the term consultation under the Article 124 and 217. The question was whether the sole opinion of CJI could be itself constitute a consultation. In response, the Supreme Court laid down guidelines for the functioning collegium system. अगला न्यूज़ है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस AIJS। न्यूज़ में क्यों रहा? तो रिसेंटली ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर सेलिब्रेशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल्ड फॉर एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस AIJS टू रिक्रूट जजेस। अबाउट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्या है? तो AIJS इज अ रिफॉर्म दैट सीक्स टू सेंट्रलाइज द रिक्रूटमेंट of judges at the level of additional district judge and district judge of all states. Genesis of AIJS. The idea of AIJS was first proposed by the 14th report of Law Commission of India on judicial reform in 1958. Constitutionality क्या है? तो the provision of AIJS was included in Article 312 of the Constitution through the 42nd Amendment in 1976, but it still requires a bill to decide on its board counters.
प्रेजेंट स्टेटस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ जज इन लोअर जुडिशरी क्या है? तो आर्टिकल 233 एंड 234 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज अलॉन्ग विथ लोअर जुडिशरी एंड प्लेस इट इन द डोमेन ऑफ द स्टेट्स. All judges of the lower judiciary up to the level of district judge are selected through the provincial civil services judicial exam is in most of the states. The selection process is conducted by the State Public Service Commission and the concerned High Court, as High Court exercise jurisdiction over the subordinate judges in the state. अगला है लीगल एड. तो ये न्यूज़ में क्यों रहा? रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल Public Grievances, Law and Justice presented a report on review of the working of legal aid under the Legal Service Authorities Act 1987. Legal aid क्या है? तो legal aid refers to a free legal service to the poor and needy people who cannot afford the service of a lawyer for the conduct of the case in any court. Initiative for legal aid in India कहाँ से कब शुरू हुआ? तो Legal Service Authority LSA Act 1987 provide a statutory framework of legal aid in India. Under the Act, the National Legal Service Authority (NALSA), State Legal Service Authority (SALSA), and District Legal Service Authority (DLSA) are established at the national, state, and district level respectively. Lok Adalat is an alternative dispute redressal (ADR) mechanism under the Act, where disputes pending in the court of law or at the pre-litigation stage are settled amicably. Paralegal volunteers (PLVs), trained person who assist the LSAs and Lok Adalat in providing free legal aid to the needy people. Supreme Court Legal Service Committee (SCLSC) constituted under Section 3A of LSA Act 1987 to provide free legal service to poor, underprivileged and marginalized. Patron-in-Chief of SCLSC, Chief Justice of India. Members क्या है? तो चेयरमैन, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 9 members nominated by Chief Justice of India. Designing innovative solution for holistic access to justice, दिशा स्कीम. इसके अंदर क्या था? तो introduced by the Department of Justice to create awareness through the use of technology and developing simplified information, education and communication (ICE) material for the masses. Its component include क्या क्या include करता? तो न्याय बंधु, to create a pan-India framework for dispensation of pro bono legal services. दूसरा है टेली-लॉ for mainstreaming legal aid to marginalized community through the common service centers (CSCs). अगला है लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम LLAP to enable the vulnerable section of society to have information about their legal rights and entitlement. अगला है न्याय मित्र स्कीम launched in 2017 to facilitate the district judge in getting more than 10-year-old pending court case disposed by providing legal aid to the litigants. Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Scheme provide legal services to middle income group citizen whose gross income does not exceed 60,000 per month or 7,50,000. फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू लीगल एड इन इंडिया और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू लीगल एड. तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पहले देख लेते हैं. आर्टिकल 39A प्रोवाइड दैट स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री लीगल एड by suitable legislation or scheme. अगला है आर्टिकल 22 क्लॉज 1. Every individual who is detained or imprisoned is guaranteed the right to legal representation by a lawyer of their choice. It implicitly recognizes the right to legal assistance. अगला है judicial pronouncement related to legal aid. M.H. Hoskote versus State of Maharashtra 1978. Supreme Court said the right to free legal aid is the duty of the government and is an implicit aspect of Article 21. Hussain Nara Khatun versus State of Bihar 1979. Supreme Court held that legal services are an essential ingredient of just, fair and responsible
प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 21। यहाँ पर देख लेते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये क्या है? तो ये पहले तो एक स्टेचुअरी बॉडी है, इसके अंदर देखते हैं क्या है। तो जेनेसिस इसका क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। कंपोजिशन क्या है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द पैट्रन इन चीफ एंड अ सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। फंक्शन क्या है? तो इट प्रोवाइड लीगल फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेज लोक अदालत फॉर amicable settlement of dispute. Eligible litigants as per section 12 of LSA Act 1987. Women and children, member of scheduled caste or scheduled tribe, industrial workman, person with disability or in custody, etc. Person who have annual income of less than the amount prescribed by the respective state government for cases in any court other than the Supreme Court, or less than rupees 5 lakh if the case is before the Supreme Court. हमारा अगला टॉपिक है मेडिएशन एक्ट 2023। न्यूज़ में क्यों था? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली ग्रांटेड assent to the passed mediation act 2023 seeking to promote mediation as a preferred mode of alternative dispute resolution ADR in India. About alternative dispute resolution ADR क्या है? तो it refers to a different way of people can resolve dispute without a trial. Refer infographic. ओके देख लेते हैं। अदर स्टेप टू प्रमोट ADR इन इंडिया क्या है? तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 एंड आर्बिट्रेशन एंड Conciliation Amendment Act 2019 for the establishment of Arbitration Council of India. Legal Service Authority Act 1987। अगला है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर NDIAC Act 2019 for the establishment of NDIAC for facilitating institution arbitration. Next is Commercial Council Act 2015 provide for such commercial court to adjudicate commercial dispute. Next is Singapore Convention on Mediation is a uniform and efficient framework for international settlement agreement resulting for mediation. तो यहाँ पर दिया हुआ है 5 types of ADR। तो इसमें देख लो पहला कॉन्सिलेशन, इसमें हो जाता है न्यूट्रल थर्ड पार्टी टू कम्युनिकेट विद द पार्टीज इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सेटलमेंट ऑप्शन। नेक्स्ट इज नेगोशिएशन, traditionally occur directly between the parties and the council and their council and it does not involve a neutral third party. Next is mediation, a very flexible process that can be effectively used at any time during the course of the dispute. Next is collaborative law, both parties are represented by a collaborative authority and both parties agree not to litigate. Next is arbitration, a neutral arbitrator render a decision called an award after there has been a presentation of evidence. Key highlight of Mediation Act 2023। की highlights क्या है? तो पहला है define mediation, it include expression mediation, pre-litigation mediation, online mediation and community mediation. Parties attempt to reach an amicable settlement of their dispute with the assistance of the third person referred to as a mediator. Voluntary pre-litigation mediation, parties can attempt to settle civil or commercial dispute by mediation before approaching any court or certain tribunal. Next is dispute not fit for mediation. List include मतलब इसमें क्या क्या है? तो पहला है relating to claims against minor or person of unsound mind. दूसरा है insolve involving criminal prosecution. Third is affecting the rights of third party. अगला territorial jurisdiction, mediation to take place within the territorial jurisdiction of the court or tribunal of competent jurisdiction unless parties agrees otherwise or undertake mediation in online mode. अगला है timeline for conducting mediation, must be completed within 120 days which may be extended by another 60 days with the consent of the parties. A party may withdraw for mediation after 2 sessions.
Court annexed mediation must be conducted as per the rule framed by the Supreme Court or High Court. अगला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्या कब हुआ था? तो इसमें क्या क्या है? तो कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन, 2 फुल टाइम मेंबर विथ एक्सपीरियंस इन द मेडिएशन और एडीआर, एक पार्ट टाइम मेंबर इंक्लूडिंग द लॉ सेक्रेटरी एंड एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, एंड 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर। डिफाइंस मेडिएशन सर्विस प्रोवाइडर क्या है? तो एज अ बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एमसीआई फॉर कंडक्टिंग मेडिएशन. Mediation can be done by the authority constituted under the Legal Service Authority Act 1987. Also, conduct of community mediation क्या है? तो to resolve dispute likely to affect the peace and harmony among residents of the locality by a panel of 3 mediator. Enforceability क्या है? तो agreements resulting for mediation will be binding and enforceable in the same manner as court judgment. Verdict can be challenged before a competent court within 90 days. Mediated settlement can be challenged on ground of fraud, corruption, impersonation and dispute and not fit for mediation only. अगला है लोक अदालत। तो ये न्यूज़ में क्या था? तो लोक अदालत इज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, ADRM. ADRM involves various method of resolving conflict outside of the traditional court system. They provide a speedy, cheaper and more amicable approach to resolve conflict. Key aspect of लोक अदालत क्या है? तो establishment under Legal Service Authority Act 1987. Tier क्या है? तो constituted at a different level, namely national लोक अदालत, state authority level, high court level, district court level and तालुका level. National लोक अदालत are held at regular interval, whereas on a single day lok adalat are held throughout the country. Mobile lok adalat are also organized. Jurisdiction इसका क्या है? तो dispute या case pending in the court of lower or at pre-litigation state. Nature of case क्या होगा? तो civil case होगा, matrimonial dispute होगा, land dispute होगा, partition property dispute होगा, labor dispute etc. and non-compoundable criminal case. Power इसका क्या है? तो have the same power as are vested in civil court under the Code of Civil Procedure 1908. Decision awards are final and binding on all parties. No appeal shall lie in any court against its award. Model Prison Act 2023, Prison Acts. इसमें न्यूज़ में एक रहा तो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैड प्रिपेयर्ड द मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 दैट विल रिप्लेस द प्रिजन एक्ट ऑफ 1894. व्हाट proposal are included under the model prison act 2023? क्या क्या proposal है? To ensure good conduct, इसमें provision for the grant of parole, furlough and remission to prisoners. Parole is a system of conditional release of a prisoner with suspension of the sentence for a specific period. Furlough क्या है? तो is given in case of long term imprisonment. The period of furlough generated to a prisoner is treated as a reduction of his sentence. Bail means procurement of release from prison of a person awaiting trial or an appeal for reformation and rehabilitation. Bring about attitudinal change toward prison. Vocational training and skill development. अगला है for better safety and security. Separate accommodation of women and transgender inmates. Use of technology in prison administration, establishing high security jail. Other measures क्या है? तो provision for and open, semi-open jail have also been inserted. Measures for prison to video conference with court have also been introduced. Along with the Prison Act 1894, the Prisoners Act 1900 and the Transfer of Prisoners Act 1950 have also been reviewed and their relevant provision has been assimilated into the Model Act. About Prison Act 1894 क्या था? तो it was the first legislation that governed the management and administration of the prison in India. It is based on recommendation of the Prison Discipline Committee appointed by Lord Macaulay in 1936. It defined a prison as any jail or place used permanently or temporarily for the detention of prisoners, excluding close custody and subsidiary jail. It also laid down provision for the
prisoners' employment, health and visits. कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफ गार्ड रिलेटेड टू प्रिजन, और इसी तरह से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू प्रिजन एक्ट. तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल देख लेते हैं. तो शेड्यूल 7, prisons या prisons detained therein is a state list subject under entry 4 of a state of list 2. Administration and management of prison and prisoners is the responsibility of respective state government. Article 39A enumerates the constitutional right to the accused to be provided free legal aid service. Next is other important act. कौन सा है? तो Repatriation of Prisoners Act 2003, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022. इसी तरह से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू प्रिजन्स राइट क्या है? तो मोहम्मद गयासुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 1977 SC 1926. The court strongly endorsed the importance of the hospital setting and the therapeutic goal of imprisonment. अगला प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड देयर इज नो compulsive need for feeder change a person's limbs. Next is Sheila Barsi versus State of Maharashtra related to custodial violence to women prisoners in jail. यहाँ पे कमेटी ऑन प्रिजन रिफॉर्म देख लेते क्या था. सर अलेक्जेंडर कार्ड्रिव कमेटी 1999-20 और अगला है मुल्ला कमेटी 1980 to 1930. अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में कौन कौन सा देख लेते. तो आर्टिकल 142. तो इसमें क्या था? तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट कुड अंडर आर्टिकल 142 डायरेक्टली ग्रांट डिवोर्स इन केस वेयर मैरिज हैज़ irrelevantly broken down, dispensing with period prescribed under Hindu Marriage Act HMA 1955. Article 142 provides Supreme Court power to do complete justice between parties where at times law or statute may not provide a remedy. While power under Article 142 are sweeping in nature, Supreme Court has defined its scope and extent through various judgment. Judicial pronouncement related to Article 143 क्या है? तो प्रेमचंद्र गर्ग केस 1962 demarcate contour for power under Article 142 under Carbide Corporation versus Union of India Supreme Court in 1991, while highlighting wide scope of Article 42 ordered compensation for the victim. Supreme Court Bar Association versus Union of India 1998. Powers under Article 142 also supplementary and could not be used to supplement or override the substantive law. Next is doctrine of primacy estoppel. In the hearing related to Agnipath scheme, plaintiff party moving court in a civil action cited doctrine of primacy estoppel. Primacy estoppel is a concept developed in contractual law. It essentially prevents a primacer from backing out of an agreement on the ground that there is no consideration. It is invoked by a plaintiff to ensure execution of a contract or seek compensation for failure to perform the contract. Next is narco analysis test. तो इसमें क्या था? रिसेंटली रेसलर protesters in Delhi have asked to undergo narco test provided it is monitored by the Supreme Court. As part of narco test, sodium pentothal, also called truth serum, is injected into a person, which lowers a person's self-consciousness, allowing them to speak without inhibition. The Supreme Court in Selvi versus ORS versus State of Karnataka in Karnataka and ANR 2010 rules that narcoanalysis, brain mapping and polygraph test cannot be conducted on any person without his or her consent. The judgment was based in view of Article 20 Clause 3 right against self-criminalization and Article 21 relate to the life and personal liberty. Narcoanalysis report is not admissible as primary evidence in the court. However, any information that is subsequently discovered with the help of
voluntary administrator test result can be admitted. Next is recusal by judges. Supreme Court SC judge refers to recuse himself from hearing a plea from a former Indian Police Service IPS officer. Whenever there is potential conflict of interest, a judge can recuse or withdraw from the case to prevent the perception of being biased. India has no codified rule governing recusal, and the decision to recuse rests solely on the recursion and discretion of the judge. If a judge recuses himself, the case is listed before the Chief Justice for allocation of an alternate bench. Kinds of recusal क्या है तो automatic when a judge himself withdraw from the case and when a party raises a plea for recusal highlighting the possibility of bias of personal interest of the judge in the case. अगला advocate on record AOR system in Supreme Court. AOR is a lawyer in the Indian legal system who is registered and authorized by Supreme Court to represent clients in that court. The Advocate Act provides two kinds of advocate, that is senior advocate and advocate. However, the SC in the exercise of its rule-making power under Article 145 made a provision for AOR system. Supreme Court rules 2013 prescribe eligibility criteria for an AOR. Only AOR is entitled to file any matter or document before the Supreme Court. Senior advocate is not entitled to appeal without AOR in Supreme Court. Fast Track Special Court FTSC's scheme. Union Cabinet approved continuation of Fast Track Special Court FTSC scheme under March 31, 2026. Launched in 2019, FSTCs is a centrally sponsored scheme and implemented by Department of Justice, Ministry of Law and Justice. Central share is to be founded by Nirbhaya Fund aimed at enhancing the safety and security for women. FTSCs designed as dedicated court were established by for hearing rape and protection of child for sexual offense act POCSO Act cases. Enactment of Criminal Law Amendment Act 2018, which include stringent punishment including health penalty for rape offender, led to the creation of FTSCs. FTSCs are linked to National Judicial Data Grid. Nari Adalat. Nari Adalat is a part of Sambhal sub-scheme under Mission Shakti, which operates under Ministry of Women and Child Development. Mission Shakti aims to strengthen women's safety, security and empowerment. Nari Adalat provide women with an alternate grievances redressal mechanism for resolving cases of petty nature, harassment, curtailment of rights, etc. faced by women at Gram Panchayat level. This platform will be utilized for engaging with public for awareness generation, getting feedback for improvement in scheme and for effective public delivery of services. अगला है न्याय विकास पोर्टल. न्याय विकास पोर्टल has been created by Ministry of Law and Justice for monitoring the implementation of centrally sponsored scheme CSS for development of infrastructure for judiciary. About न्याय विकास क्या है तो Department of Justice has been implementing CSS for development of infrastructure facilities for district and subordinate justice since 1993 and 94. Central assistance is provided to the state government UT administration for construction of court halls and residential unit for judicial officers, judges of district etc. Funding का है तो नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट 19:10 रेशियो एंड यूनियन टेरिटरी 100%. रिमेनिंग स्टेट क्या 60-40 रेशियो पे. Justice Clock. It is an electronic signage system which have been installed across the court complex of high courts. The initiative was inform stakeholders about court-related key parameter and bring awareness among public by providing bird eye view on court-related data. Technology in judiciary क्या है तो Supreme Court
issue direction to all the high court for ensuring digitalization of lower court record. अदर इनिशिएटिव टेकन क्या है तो ई कोर्ट मिशन, ए मिशन मोड प्रोजेक्ट फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ जुडिशरी, इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS to enable seamless transfer of data and information among stakeholders like court, police, jails. Fast and secure transmission of electronic record, faster by Supreme Court, a software to transmit court orders swiftly and securely through electronic mode. अगला है सुभाष, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर टू ट्रांसलेट इंग्लिश जजमेंट इनटू रीजनल लैंग्वेज. E-SCAR portal, it provides the digital version of the apex court judgment in same manner that they are reported in the official law report. Next is India Justice Report. The third edition of the report was released by Tata Trust in collaboration with representatives from several civil society organizations, including the Center for Social Justice, Daksh, Vidhi Center for Legal Policy, etc. The report assesses and ranks each state progress in capacitating its major justice delivery mechanism, the judiciary, police, prison, and legal aid. आवर नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्शन से रिलेटेड सारे न्यूज़ यहीं पे हैं, तो आइए एक एक करके इसे देख लेते हैं. पहला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023. तो ये न्यूज़ में क्यों रहा, तो द प्रेसिडेंट गेव हिज एसेंट टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023. फिर से देख लेते हैं. चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023 की प्रोविजन क्या है, तो अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो CEC एंड ECs shall be appointed by president of the on the recommendation of selection committee. सिलेक्शन कमेटी के मेंबर क्या है, तो एक सिलेक्शन कमेटी कंसिस्ट ऑफ, एक होगा प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा. अगला है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. फिर है सर्च कमेटी headed by the Ministry of Law and Justice shall prepare a panel of 5 persons for consideration of the selection committee. Eligibility criteria क्या है, तो person who are holding or have held a post equivalent to the rank of secretary to the government of India and should a person of integrity who has knowledge of and of experience in management and conduct of elections. Salary क्या है, तो equal to the salary of judge of Supreme Court. Terms of office क्या है, तो ECs CEC and other ECs shall hold office for a term of 6 years from the date on which he assumes his office or till he attain the age of 65 years, whichever is earlier. CEC and ECs shall not be eligible for reappointment. Where an CE is appointed as CEC, his term of office shall not be more than 6 years in aggregate as the EC and the CEC. Conduct of business क्या है, तो all businesses of the election commission is to be conducted unanimously. In case of a difference of opinion between the CEC and the other ECs or any matter, it shall be decided through the majority. Removal and resignation. CEC can only be removed from his office in manner and on grounds similar to that of a Supreme Court judge. An EC can be removed from the office upon the recommendation of CEC. The CEC or any EC may resign at any time by writing to the President. Constitutional and legal safeguard for EC and judicial pronouncement related to CEC and EC's appointment. तो constitutional पहले देख लेते हैं. तो Article 342, the Election Commission of India is an autonomous constitutional authority, administers union and state election and the office of the President and Vice President in India. Article 324, Clause 2, the President of India is empowered to appoint the CEC and ECs. It empowers the President of India to fix from time to time the number of election commissioners other than the CEC. Judicial pronouncement related to CEC and EC's appointment क्या है,
तो Anup Varnawal versus Union of India case 2023. Supreme Court ruled that the CEC and EC will be chosen by a committee comprising the Prime Minister, the Leader of Opposition in Parliament, and the Chief Justice of India. Till this SC ruling, Election Commission and CEC had been appointed by the President after recommendation from the government. Our next topic is aspects of election process and reform. तो उसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं या हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का यूपीएससी प्री देने वाला है, क्योंकि उनके लिए करंट अफेयर काफ़ी अहम भूमिका निभाएगी और उन्हीं के लिए यह वीडियो स्पेशली बनाया ही जा रहा है जो इस बार यूपीएससी देने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपके लिए बहुत सारा वीडियो बना हुआ है जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मिलता है आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा उतना ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस हो सकेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे विजन IAS PT 365 सीरीज़ में, जिसमें लोग पॉलिटी कर रहे हैं और ये हम लोग को काफ़ी समय से इंतजार था PT 365 का। तो पॉलिटी आ गया और हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे और इससे पहले भी हम लोगों ने कई सारे लेक्चर्स इसके बना लिए थे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उससे जाइए, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा प्लेलिस्ट का, आप लोग जाइए इसे ज़रूर से ज़रूर देखें। और इसमें बाजीराव एंड रवि का करंट अफेयर पूरा डील किया हुआ है, तो आप लोग उसे भी देखें। और मैं यह दावा करता हूँ कि आपको यहाँ पे यूपीएससी प्री के लिए इतना सारा कंटेंट मिलेगा कि आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितना लाभान्वित हो रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार यूपीएससी का प्री देने वाले हैं, क्योंकि उन तक इस वीडियो को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा और उन्हीं के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो बस आपसे ये अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं, यहाँ से एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स। तो ये न्यूज़ में क्यों आया? रिसेंटली द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस लॉ एंड जस्टिस टेबल्ड a report on specific aspect of election process and their reforms. फिर की एस्पेक्ट ऑफ द रिपोर्ट क्या है? तो कॉमन इलेक्टोरल रोल CER. इंडिया हैज़ टू टाइप ऑफ इलेक्टोरल रोल। पहला जनरल इलेक्टोरल रोल ओवरसीन बाई ECI एंड सेपरेट इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर्ड बाई SEC। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड क्या है इसके लिए? तो आर्टिकल 324 Clause 1. It empowered the Election Commission of India to supervise, direct and control the preparation and revision of electoral roll for all elections to Parliament and state legislature. Article 243K and 243ZA entrust the state election commissioners with the task of overseeing the preparation and revision of electoral roll for local body election. Representation of the People Act 1950. The preparation and revision of electoral roll for parliamentary and assembly constituency are governed under the provision contained in part 2B section 13D. False declaration during filing of nomination of election. Legal safeguard क्या है? तो candidates contesting election must file an affidavit in form 26 under the conduct of election rule 1961. Section 33A UPA under RPA 1951 require candidates to disclose information about changes framed by a court against them for offences punishable by more than 2 years imprisonment and any conviction resulting in imprisonment of 1 year or more. Section 125A of the Representation of People Act of 1951 deals with the penalties for providing false information. फिर है मिनिमम एज ऑफ वोटिंग एंड कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर मिनिमम एज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन। आर्टिकल 84 मिनिमम 25 ईयर इन लोकसभा एंड 30 ईयर इन राज्यसभा। उसी तरह से आर्टिकल 173 मिनिमम 25 ईयर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 30 ईयर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगला सिमुलटेनियस इलेक्शन। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा? द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कमिटी अंडर former President Ramnath Kovind to examine the feasibility of simultaneous election
ऑन और वन नेशन वन इलेक्शन। अबाउट सिमल्टेनियस इलेक्शन क्या है? तो एम्ड टू सिंक्रोनाइज द इलेक्शन टू लोकसभा, स्टेट असेंबलीज, municipalities and panchayat such that voters in a particular constituency vote on the same day. It does not mean that voting across the country for all elections need to happen on a single day. It is conducted in a phase-wise manner as per the existing practice, provided voters in a particular constituency vote for both the state assembly and Lok Sabha on the same day. Simultaneous election were the norm until 1967, following the dissolution of some legislative assembly in 1968 and 1969 and the Lok Sabha in 1970. The election to state assemblies and parliament have been held separately. Later, the simultaneous election idea was proposed by the Election Commission in 1983. It was recommended by Dinesh Goswami Committee. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू सिमल्टेनियस इलेक्शन कौन कौन है? तो आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 85 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोरगेशन एंड डिसोल्यूशन, आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटर, आर्टिकल 174 सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर प्रोरगेशन एंड डिसोल्यूशन, आर्टिकल 356 प्रोविजन इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। नेक्स्ट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये क्या है? तो ये न्यूज़ में क्यों था? रिसेंटली ए रिपोर्ट टाइटल्ड एनालिसिस ऑफ सिटिंग एमपीज फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया 223 was released. More about news में क्या है? The report was released by the Association for Democratic Reforms ADR and National Election Watch. ADR was established in 1999 by a group of professors from the Indian Institute of Management IIT Ahmedabad. Kerala has the highest number of MPs with criminal cases, followed by Bihar and Maharashtra. Criminalization of politics. COP refers to the infiltration of criminals, lawbreakers, and corrupt individuals into the political system. Legal safeguard in contest convicted candidate क्या है? तो सेक्शन 8 Clause 3 of Representation of People Act 1951 says that a lawmaker sentenced to at least 2 years in jail remains disqualified for 6 years upon this release. Section 8 Clause 4 of the RP Act 1951 allows convicted MP, MLA and MLC to continue in their post provided they appealed against their conviction or sentence in higher court within 3 months of the date of judgment by the trial court. In Lily Thomas versus Union of India case 2013, Supreme Court ruled this section as unconstitutional. अगला judicial pronouncement related to criminalization of politics. Union of India versus Association of Democratic Reform 2022. Supreme Court stated that electors have a fundamental right to be informed the antecedents of candidates. PUCL versus Union of India 2004. Supreme Court declared Section 33B of Representation of People Act 1951 as unconstitutional and void. The section allows candidates to furnish information only under the Act. Public Interest Foundation versus Union of India 2018. Supreme Court ordered political parties to publish the criminal record of their candidate on the website, social media handles and newspapers. Ram Babu Singh Thakur versus Sunil Arora 2020. Supreme Court directed the Election Commission to report to the Supreme Court any non-compliance by political parties. Various Committee on Criminalization of Politics. N. Vora Committee Report 1993 states that the nexus between the criminal gangs, police, bureaucracy and politicians have come out clearly in various parts of the country. Other commissions: National Commission to Review the Working of the Constitution 2001, Second Administrative Reform Commission 2005 etc. अगला है इलेक्टोरल फंडिंग. तो न्यूज़ में क्यों रहा ये? तो रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन टू सबमिट डाटा ऑन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज टिल सितंबर 30, 2023. मोर इन न्यूज़ में क्या है? तो इन 2019 while hearing the Association for Democratic Reforms ADR petition against the electoral bond scheme, the Supreme Court asked the Election Commission of India to submit data on electoral bond received by political parties. State Bank of India has revealed that only 25 political parties have opened the bank account necessary to receive electoral bonds. Electoral bonds है क्या? तो EBs are
Interest-free bearer bonds of money instrument that can be purchased by companies and individual in India from authorized branch of State Bank of India (SBI). Announced in Union Budget 2017-18, sold in multiples of 100, 10,000, 1 lakh, 10 lakh and 1 crore. Purchased through a KYC compliant account to make donation to a political party. No cap on the number of EBs. This that a person or a company can purchase. Available for purchase for 10 days each in January, April, July and October. All transactions of EBs are carried out via check or digitally. The identity of donor remain confidential, reducing the risk of rationalization of intimidation for their political affiliation. अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में क्या क्या है? पहला है नेशनल पार्टी स्टेटस, citing the election symbols reservation and allocation order 1968, which stipulates criteria for recognition as a national or state party. The Election Commission of India ECI now recognizes 6 national parties. कौन कौन से? तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपी, मार्क्सिस्ट नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी एंड आम आदमी पार्टी आप. हाउ इज पार्टी नेशनल स्टेटस डिक्लेयर्ड? कैसे डिक्लेयर होता है? तो वोट्स इन लोकसभा स्टेट पोल्स. ए पार्टी शुड सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वोट्स polled in 4 or more states in Lok Sabha Assembly election and in addition have at least 4 members in Lok Sabha. Seats in Lok Sabha, it should have at least 2% of total Lok Sabha seats and have candidate from not less than 3 states. Must be a state party in at least 4 states. Benefits of national party क्या क्या है? तो exclusive allotment of its reserved symbol for its candidate throughout the India. Need only one person to propose a candidate's name to file nomination. Get broadcast facility on Akashvani Doordarshan during several election. Can have up to 40 star campaigner while other can have up to 20 star campaigners. Star campaigners क्या है? तो Election Commission of India issue advisory to all star to remain within the confines of a model code of conduct. About a star campaign क्या है? तो they are nominated by political parties to campaign in each set of constituency for a specified duration. There is no law governing who can or cannot be made a star campaigner. List of a star campaigner must be communicated to Chief Election Officer and ECI within a week from election notification date under Section 77(1) of Representation of People Act RPA 1951. Recognized political party can have 40 star campaigners and an unrecognized but registered political party can have 20. Poll expenditure. As per Section 77 Clause 1 RPA 1951, they travel by air or any other mean of transport for propagating program of a political party shall not be counted as the expenditure of candidates. Freebies. Central Board of Indirect Tax and Customs CBIC issued Standard Operating Procedure SOP to limit the usage of freebies and liquor to attract voters. Freebies can be defined as offering distribution of irrational offering from political parties as part of electoral promises such as pressure cooker, washing machine, television sets, etc. free of charge. SOP aims to prevent suspicious cash, illicit liquor, drug, narcotics, freebies and smuggled good during assembly and general election. Key highlights of SOP क्या है? तो GST and custom officer to monitor the distribution of coupon based on free fuel or cash for alluring prospective voters. Setting up flying squad and static surveillance team for vehicle checks and verification of warehouses. Movement of items like saris, party flag, etc. associated with candidate or political party without an e-way bill may be confiscated. अगला है poll expenditure. Declaring candidate for assembly election week before poll announcement have exposed gap in election commission EC poll expenditure monitoring rule. Rules stipulated accounting of candidates spending from the date of their nomination and not from the announcement of polls.
According to Section 77, Clause 1 of Representation of People Act RPA 1951, candidates are expected to keep an account of expenditure from date on which he or she has been nominated till date of declaration of results. Spreading more than maximum limit of election expenses is regarded as a corrupt practice under Section 123, Clause 6 of RPA 1951. अगला है इलेक्टोरल लिटरेसी. Recently, ECI signed a MOU with the Ministry of Education to bring electoral literacy to classroom across the country. Salient features of MOU क्या है? तो systematically integrating voter education and educational literacy into the curriculum, starting from class 6 to 12 in all schools. Initiative taken to promote electoral literacy. So systematic voter education and electoral participation SVEEP program, flagship program of ECI for voter education, spreading voter awareness and promoting voter literacy in India. Electoral literacy clubs ELCs set up in institute compasses across the country by ECI under SVEEP program. It is a platform to engage school students through interesting activities and sensitize them on their electoral rights and familiarize them with electoral process on registration and voting. Electoral literacy include क्या क्या है इसमें? तो information on government principal, economic, social and political issues that the nation is facing, the value of democracy and equal rights of women and men among others. अगला है enabling communications on real time environment EN core. Election Commission had designed in-house software for complete candidate and election management through InCore. It is an end-to-end application for returning officer to digitize the voters polled, tabulate the round-wise data, and then take out various statutory report of counting. Another application called the InCore Scrutiny application. It allows returning officer to scrutinize the nomination filed by the candidate online. Through the InCore nodal app, various departments like fire, education, police, environment, etc. give no objection certificates for holding rallies, roadshow, etc. to political parties or candidates. Voter verifiable paper audit trial (VVPAT). The Election Commission of India (EC) has defended the EVM VVPAT system and termed a new petition seeking 100% data cross-verification and regressive. Rule 56D and Rule 49MA to conduct of Election Rule 1961 provide for redressal of any EVM VVPAT process verification related concern expressed by the voter. VVPAT allowed voter to see a printed slip for 7 seconds showing the serial number, name and symbol of chosen candidate. हमारा अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन एंड बिल्स. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन या बिल हुआ इस पूरे 6-7-8 महीने में, वो यहाँ पे दिया. तो पहला है नारी शक्ति वंदन कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023. तो ये न्यूज़ में क्यों है? तो रिसेंटली पार्लियामेंट passed the Constitution 106th Amendment Act 2023 to provide for 1/3 reservation of women in Lok Sabha, State Assemblies and Assembly of NCT of Delhi. Key provision of the act क्या है? तो आर्टिकल अमेंडेड आर्टिकल 239AA रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट फॉर वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली. आर्टिकल इंसर्टेड क्या है? तो आर्टिकल 30A एंड आर्टिकल 332A reservation of 1/3 seat for women in Lok Sabha and State Legislative Assembly respectively. It also includes reservation of 1/3 seat for women under seat reserved for SC ST under Article 330 and Article 332. Article 334A. The Act provisions shall come into effect after delimitation following the first census after the commencement of the Act. Sunset clause क्या है? तो reservation of seat for women shall cease to have effect after the expiration of 15 years. However, it can be extended by the Parliament by law. Periodic rotation of seat reserved for women after subsequent delimitation.
The act won't affect any representation in existing legislative assembly and Lok Sabha until their dissolution. Recently, Jammu and Kashmir Reorganization Second Amendment Act 2023 and the Government of Union Territory Amendment Act 2023 were enacted by the Parliament. They seek to reserve 33% of seats for women in Jammu and Kashmir and Pondicherry Assembly respectively. Yearly attempt to at the political empowerment of women. पहले से क्या हो रहा था तो 1992 में reservation of women in panchayat and municipalities through the 73rd and 74th amendment respectively. In 1996, 81st amendment bill was introduced to reserve one-third of seat for women in Lok Sabha and state assemblies. 1998 and 1999 में क्या similar attempts were made. 2008 में क्या हुआ तो the last such attempt were made in 2008 when a bill for the reservation of women was introduced and passed in Rajya Sabha. Later the bill lapsed. अगला टॉपिक है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट एक्ट 2023. न्यूज़ में क्यों था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड एसेट टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल 2022 टू अमेंड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी MSCS एक्ट 2002. की फीचर ऑफ द एक्ट क्या है तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन एंड अप टू 3 मेंबर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. Amalgamation and division of cooperative societies. Allow cooperative societies registered under state law to merge into an existing MSCS. Cooperative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund to revive sick multi-state cooperative societies. Restriction on redemption of government shareholding. Any share held by the center and the state government cannot be redeemed without the shareholders' approval. Redressal of complaints. The central government will appoint one or more cooperative ombudsmen with territorial jurisdiction. Appeals against the direction of the ombudsman may be filed with the central registrar. Composition of board of director. The board of a multi-state cooperative society will have a maximum of 21 directors. Inclusion of पहला 1 scheduled caste and or scheduled tribe member and दूसरा 2 women members. About cooperative societies क्या है तो it is voluntary association of individual having common needs who join hand for achievement of common economic interest. Cooperative are a state subject. The subject of cooperatives is mainly dealt with the state government and union territory administration with the support and guidance of the central government. Maharashtra has the highest number of 666, followed by Uttar Pradesh 168. मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 इसमें क्या था तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या था तो कंसोलिडेट लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर इन मोर देन वन स्टेट टू फैसिलिटेट द वॉलंटरी फॉर्मेशन एंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव एज पीपल्स institutions based on self-help and mutual aid. Other developments क्या है the cabinet has approved 3 national level MSCs under the MSC Act 2002 namely कौन कौन सा तो नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी. कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स क्या क्या है तो पहला 7th शेड्यूल कोऑपरेटिव fall in the state list of 7th schedule. Next is Article 19 Clause 1 Subclause C. States shall endeavor to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative society. Article 43B DPSP to make right to form cooperative society a fundamental right. Forming a cooperative is a fundamental right under 97th Constitutional Amendment Act 2011. Next is Part 9B. It deals with incorporation, terms of member of board and its office bearer and effective management of cooperative society. Part 9B extend from Article 243 ZH to Article 243 ZT. Multi-State Cooperative Society Act 2002. It provides for registration of societies with operation in more than one state. Next is Cinematograph Amendment Act 2023. न्यूज़ में क्यों रहा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली ग्रांटेड एसेट टू द सिनेमाटोग्राफी
अमेंडमेंट एक्ट 2023। मोर अबाउट द न्यूज़ क्या है, तो इट अमेंडेड द सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 enacted to make provision for certifying cinematography film for exhibition and regulating exhibitions using the cinematograph, that provide for establishing the Central Board of Film Certification CBFC for certifying film for exhibition. Such certification may be subject to modification and deletion. The board may also refuse the exhibition of the film. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC क्या है, तो पहले तो ये स्टेटरी बॉडी है। दूसरा अबाउट में क्या है, इट रेगुलेट पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म अंडर प्रोविजन ऑफ सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952। मिनिस्ट्री कौन सा, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। विजन क्या है, टू इंश्योर द गुड एंड हेल्दी entertainment in accordance with provision in Cinematography Act 1952 and Cinematography Certification Rule 1983। कंपोजिशन क्या है, तो कंसिस्ट ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर एज अ चेयरमैन, ऑल ऑफ whom आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 9 रीजनल ऑफिसर्स का है, तो एट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कटक एंड गुवाहाटी। की प्रोविजन ऑफ द एक्ट क्या है, तो एज बेस्ड सर्टिफिकेशन मिलता है इसमें। तो इसमें क्या डिटेल क्या है, तो एक्ट इंट्रोड्यूसेस 3 एज बेस्ड सर्टिफिकेशन अंडर UA कैटेगरी, UA 7+, UA 13+, and UA 16+. These age-based makers are meant for parents or guardians to consider whether their children should view such a film. They are only recommendatory category or audience certified। तो U क्या है, यूनिवर्सल एंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन। UA क्या है, विदाउट restriction but subject to guidance of parents or guardian। A क्या है, only for adult, and S is only for member of any profession or class of persons। सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर टेलीविजन अदर मीडिया क्या है, तो फिल्म विथ एन A or S सर्टिफिकेट विल रिक्वायर अ सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर एग्जीबिशन ऑन टेलीविजन और एनी अदर मीडिया प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्टिफिकेट वैलिडिटी क्या रहेगा, तो सर्टिफिकेट विल बी परपेचुअली वैलिड एज अपोज्ड टू द प्रेजेंट वैलिडिटी ऑफ 10 years। रिवर्सल पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, तो एक्ट ओमिट्स सेक्शन 6 क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट एज डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस KM Sankrappa case 2000, which state that center cannot exercise reversal power on film already certified by the CBFC, makers film piracy a punishable offense। The act prohibits the unauthorized recording and unauthorized exhibition of film and make it punishable offense under the provision of Copyright Act 1957। पेनाल्टी क्या मिलता है, तो कैटेगरीज piracy as a criminal offense imposing penalties up to 3 years in prison, a fine amount of 5% of film production cost or both। अगला है OTT रेगुलेशन इन इंडिया। तो OTT क्या है, तो न्यूज़ में क्यों रहा, तो रिसेंटली डिजिटल पब्लिशर Content Grievances Council has recommended punitive action on an OTT over the top platform invoking the Information Technology Rules 2021। What is OTT? OTT होता क्या है, तो it offers viewers access to mobile television show and other media directly through the internet bypassing cable or satellite system। In India, regulatory platform OTT platform are called publishers of online curated content। current mechanism for OTT regulation in India। existing law में क्या है, तो certain law such as Information Technology Act 2000, Indian Penal Code 1860 and Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986 have been made applicable to the context generated on OTT platform। technology, intermediary guidelines and digital media ethics code 2021 under section 87 clause 2 of the Information Technology Act 2000। इट्स की प्रोविजन इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है, तो रूल्स गिव द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट IB द टास्क ऑफ रेगुलेटिंग कंटेंट ऑन OTT एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अगला कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑनलाइन न्यूज़ OTT प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल मीडिया। दिस कोड ऑफ एथिक्स प्रिस्क्राइब द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाई OTT प्लेटफॉर्म एंड ऑनलाइन न्यूज़ एंड डिजिटल मीडिया एंटिटीज। सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट OTT platform would
self-classify the context into 5 categories based on categories. U means universal, UA7 plus, UA13 plus, UA16 plus, and A for adult. Patent lock. Platform would be required to implement parental parental lock for content classified as UA13 plus or higher, and reliable age verification mechanism to content classified as A. Co-regulation approach. India's approach to OTT regulation can be termed as a light touch co-regulation model, where there is self-regulation and the industry level and final oversight mechanism at the ministry level. Digital Publisher Content Grievances Council DPCGC. तो जेनेसिस इसका क्या है? सेट अप अंडर द एजेस ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI इन 2021. मिनिस्ट्री क्या है? तो रजिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. मैंडेट क्या है? तो इट इज़ एन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर OCCP. एम क्या है? टू usher in a redressal mechanism which ensure a balance between addressing viewer complaints fairly and showcasing content without ad hoc intervention. Adheres to IT Rule 2021 and such other existing of new statutes and rules relating to publishing of online curated content. COTP. Cigarette and other tobacco products film rules. Under this rule, now all OTT platform has to display static message and audio-visual disclaimer on the ill effect of tobacco use. Next news is Digital Platform Data Protection Act 2023. News में क्या था? The President of India recently granted assent to the Digital Personal Data Protection Bill DPDP 2023. बैकग्राउंड क्या था इसका? तो इन 2018 सुप्रीम कोर्ट recognized privacy as a fundamental right in the case Puttaswamy versus Union of India case. Following this, the Justice Sri Krishna Committee proposed the initial draft of Personal Data Protection PDP Bill in 2018. About Digital Personal Data Protection DPDP Act 2023 क्या है? तो it aimed to regulate the processing of digital personal data and ensuring individual right to protect their data. It protects digital personal data by providing the obligation of data fiduciaries, that is, person, companies, and government entities who process data for data processing, that is, collection, storage, or any other operation and personal data. The rights and duties of data principal, that is, the person to whom the data relates. Financial penalties for breach of rights, duties, and obligations. की प्रोविजन ऑफ द एक्ट क्या है? तो स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल है. पहला है एप्लीकेबिलिटी. प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा विद इन इंडिया इन डिजिटल फॉर्म और इन नॉन डिजिटल फॉर्म एंड डिजिटलाइज्ड सब्सिक्वेंटली. प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा आउटसाइड इंडिया इफ इट इज़ फॉर ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज इन इंडिया डज नॉट अप्लाई टू पर्सनल डाटा प्रोसेस्ड फॉर एनी पर्सनल पर्पस. Personal data that is made or caused to be made publicly available by data principal to whom such personal data relates or any other person who is under legal obligation to make such personal data publicly available. अगला consent. Personal data may be processed only for a lawmaker lawful purposes after obtaining the consent of data principal, who shall have the right to withdraw consent at any time. Consent will not be required for legitimate uses, including the provision of benefits or services by the government, medical emergency, etc. For a child or a person with disability, consent will be provided by the parent or legal guardian. Data Protection Board of India DPBI provides for the establishment of DPBI by the central government. Key feature of board क्या है? तो monitoring compliance and imposing penalties. Directing data fiduciaries to take necessary measures in event of data breach. Hearing grievances made by affected person. Board member will be appointed for 2 years and will be eligible for
reappointment. Appeal against its decision will lie with the Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal TDSAT. Rights and duties of data principal. Data principal will have the right to obtain information about processing, seek correction and erasure of personal data, grievance redressal, right to nominate a person to exercise rights in case of death or incapacity. Data principal must not register a false or frivolous complaint and furnish any false particulars. Violation of duties will be punishable with a penalty of up to rupees 10,000. Obligation of data feudacies. Data feudatory entity determine the purpose and meaning or processing must पहला हो जाएगा ensure the accuracy and completeness of data, दूसरा हो जाएगा building responsible security safeguard to prevent a data breach, थर्ड हो जाएगा inform DPBI an affected person in the event of a breach, फोर्थ हो जाएगा erase personal data as soon as the purpose has been met and retention is not necessary for legal purposes. Next is significant data feudatories SDF. Central government may notify any data feudatory as SDF based on factors such as पहला हो जाएगा volume and sensitivity of personal data processed, दूसरा आएगा risk to the rights of data principal, थर्ड है potential impact of the sovereignty of and integrity of India, फोर्थ हो जाएगा security of the state, फिफ्थ हो जाएगा risk to electoral democracy, सिक्स हो जाएगा public order. SDF will have certain additional obligation including appointing a data protection officer and an independent data auditor and undertaking impact assessment. Next is exemptions. क्या क्या exemptions है? The rights of the data principal and obligation of data feudatories except data security will not apply in specific cases including क्या क्या है? तो पहला for notified agencies in the interest of security, sovereignty, public order, etc. Next, for research, archiving or statistical purposes. Next, for startup or other notified categories of data feudatories. Next, to ensure legal right and claim. Next, prevention and intervention of offenses. Next, to perform judicial or regulatory function. Next, to process in India personal data of non-residents under foreign contact. The central government may exempt certain activities in the interest of security and public order. अगला processing of personal data of children. While processing the personal data of a children, data feudatory must not undertake पहला processing that is likely to cause any detrimental effect on well-being of children and tracking behavioral monitoring and targeting advisories. Next is cross-border transfer. Bill allow the transfer of personal data outside India except the countries restricted by the government. अगला penalties. Act specifies penalties for various offences such as up to 200 crore for non-fulfillment of obligations of children and rupees 250 crore for failure to take security measures to prevent data breaches. अगला डिजिटल सर्विस एक्ट. वाई न्यूज़ में क्यों था? तो द यूरोपियन यूनियन EU has confirmed the name of 19 platform that will be subject to its online content rules under the Digital Service Act DSA. About Digital Service Act क्या है? तो DSA is the first of a kind regulatory toolbox globally and set a benchmark for a regulatory approach to online intermediaries. In 2022, DSA together with Digital Market Act DMA proposed a comprehensive framework to ensure a safer, fairer digital space. Will be applicable from 2024. DSA affects gatekeeper platform like Google, Amazon and Meta and covers the need for user consent before processing personal data for targeting advertising. Difference between the EU's DSA and India's IT rule 2021. की प्रोविज़न क्या है? तो पहले इंडिया का देख लेते हैं, फिर EU का देखेंगे, यूरोपियन यूनियन का. तो इंडियाज़ IT रूल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 क्या है? तो स्कोप क्या है? अप्लाइड
to social media intermediaries, digital news publisher and OTT platform operating in India irrespective of the country. Content moderation क्या है तो rules required social media intermediaries to approve a grievances officer, a nodal officer and chief compliance officer and establish a mechanism for receiving and resolving complaints for users. यूरोपियन यूनियन का डीएसए क्या है तो स्कोप क्या है इसका तो डीएसए अप्लाइज टू ए वाइडर रेंज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेज एंड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज ऑपरेटिंग इन ईयू इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्री. कंटेंट moderation क्या है तो डीएसए proposes a range of compliance requirement for online platform including content moderation measures, transparency obligation and data protection requirement. Both are similar in terms of due diligence requirement on social media platform, content regulation and co-regularity approach for monitoring compliance and grievances redressal. Next is Criminal Law Reform Act. तो ये न्यूज़ में क्या था, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड असेंट to 3 significant bill to overhaul the country's criminal judiciary system. पहला भारतीय न्याय संहिता 2023. It replaces the Indian Penal Code IPC 1860, the principal law or criminal offence of India. Background क्या था? Prior to IPC 1860, Parliament, Charter and Act East India Company Regulation, Hindu law, Muslim law, customary law, etc. Draft of Penal Code 1837 under Thomas Bington Macaulay. Effect of 1857 Rebellion. IPC was finally enacted in 1860. Post enactment of IPC 1860, several law commissioner report have recommended amendment of the IPC on subject including offence against women, food adulteration, death penalty, etc. की प्रोविजन क्या है इसमें तो फॉर द फर्स्ट टाइम कम्युनिटी सर्विस एज वन ऑफ द पनिशमेंट फॉर पेनाल्टी ऑफेंस, इंक्रीज थ्रेशोल्ड फॉर गैंग रेप विक्टिम टू बी क्लासिफाइड एज ए मेजर फ्रॉम 16 to 18 year of age. All criminalized sexual intercourse with a woman by deceitful means or making false promises. It removes the offense of sedition and inserted penalties penalize the following. कौन कौन सा तो existing to existing or attempting to excite secession, armed rebellion or subversive activities. दूसरा encouraging feeling of separatist activity or endangering the sovereignty of or unity of and integrity of India. It defines organized crime as any continuing unlawful activity including kidnapping, extortion, contract killing and land grabbing, cybercrime, etc. Murder or grievous hurt by a group on the ground of race, caste or community, sex, place of birth, language or personal belief. Each member of such group shall be punished with death or life imprisonment and a fine in case of murder, imprisonment for a full term of up to 7 years and a fine in case of ग्रीवियस हर्ट. अगला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे. इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं. उम्मीद आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा. आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इसे कितना लाभान्वित हो रहे हैं. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का यूपीएससी प्री देने वाले हैं, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है. और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप और अच्छी तैयारी कर सकें. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन IAS PD 365 सीरीज़ में, जिसमें लोग पॉलिटी कर रहे हैं और यह कंटिन्यू वीडियो लेक्चर रहेगा. और हम लोगों ने पहले ही बहुत सारे वीडियो लेक्चर अपलोड किए हुए हैं इसका विजन IAS PD 365 पॉलिटी का. तो आप लोग अगर पहले के नहीं देखें तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए से चेक कीजिए. और इसी के साथ साथ हम लोग वाजीराम एंड रवि के भी करंट अफेयर को कंटिन्यू कर रहे हैं. तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देखिए. और मैं ये अश्योर कर सकता हूँ आप लोगों को कि आपको यूपीएससी से रिलेटेड यहाँ पे इतने सारे फैक्ट मिलेंगे, इतने सारे करंट अफेयर मिलेंगे कि आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है. बस हमारे साथ बने रहिए
और आपको हर वो चीज़ मिलेगा जो यूपीएससी से रिलेटेड आपके लिए ज़रूरी होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है, और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं, उन तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके और अपने करंट अफेयर की तैयारी को और मजबूत कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है यहाँ से। आज यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे, यहाँ शुरू होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म में के अंडर चल रहा था, और यहाँ से आज हम शुरू करने वाले आज का अपना टॉपिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 शुरू करते हैं। इट रिप्लेसेस द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 CRPC विच प्रोवाइडेड फॉर द प्रोसीजर फॉर अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल अंडर वेरियस एक्ट। बैकग्राउंड क्या था तो देख लेते हैं। CRPC was first enacted in 1861 under British rule and later substituted by fresh code successively enacted in 1872 and 1882. It has undergone several amendments, most importantly in 1898, 1923 and 1955. CRPC 1973. The Law Commission of India in its 41st report recommended a significant revision of the code which led to the creation of CRPC 1973 की प्रोविजन क्या है तो डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हु हैव कंप्लीटेड 1/3 of the maximum period of imprisonment shall be released on bond. If an accused has spent half of maximum period of imprisonment specified for an offence shall be released by the court on bail. This does not apply to offence punishable by death, life imprisonment and persons against whom proceedings are pending in more than one offence. मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है तो एनी पुलिस ऑफिसर कैन रिक्वेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस इंक्लूडिंग रेप केसेस। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्या है तो मैंडेटरी फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विथ एट लीस्ट 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। स्पेसिमेन क्या है तो इट एम्पावर्स अ मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर any person to provide specimen signature, handwriting, finger impression and voice samples. Timeline for procedure क्या है तो for instance submission of medical reports to investigating officer, giving judgment, informing the victim of progress of the investigation and framing of charges. अगला है भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023. It replaces the Indian Evidence Act 1872 IAE which governed the admissibility of evidence in Indian court in all civil and criminal procedures. बैकग्राउंड क्या है तो पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। द एविडेंस एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1872 टू कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू एविडेंस ऑन विच द कोर्ट कुड कंक्लूड एंड प्रोनाउंस द जजमेंट। की प्रोविजन क्या है इसका तो admissibility of electronic or digital record as evidence will have the same legal effect as paper records. Allowed oral evidence. It includes statements made before courts by witness in relation to a fact under inquiry. It allows oral evidence to be given electronically. Joint trial क्या है तो a joint trial refers to the trial of more than one person for the same offence. The act adds that trial of multiple persons that are accused has absconded or has not responded to an arrest warrant will be treated as a joint trial. Special and local laws के SLL क्या है तो देख लेते हैं। Recent tabling of bill or on criminal laws has kept special and local laws SLL away from the ongoing reform process. Cognizable crimes are broadly categorized as those falling either under the Indian Penal Code IPC or under the special and local laws SLL. Cognizable offense is defined as the one which an officer in charge of a police station may investigate without the order of a magistrate and effect arrest without warrant. About special and local laws SLL. A special law is a law applicable to a particular subject covering specific issues. Example क्या Unlawful Activities Prevention Act 1967 UPA. A local law is a law applicable only to a particular part of India. Example में क्या है तो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्ट MCOCA.
1999। अगला टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो न्यूज़ में क्या था, तो रिसेंटली द एक्ट टू अमेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1967 वाज पास्ड। बैकग्राउंड क्या था इसका, तो की फीचर्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट ऑफ 1967 आर, कौन कौन सा है, तो इट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला है चीफ रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार एंड रजिस्ट्रार टू बी अपॉइंटेड इन एवरी स्टेट by the state government for the implementation of the act in the state, district and local level respectively. अगला provides to obtain an exact extract from the registrar related to any birth or death. अगला है in respect of birth or death occurring in a house, it is the duty of the head of the house and in hospital the medical officer in charge is responsible for reporting. अगला है a birth certificate can be obtained without the name of the child. The registration of the birth and death fall under the concurrent list. The act has not been amended since its inception. Key features of Birth and Death Amendment Act 2023. Key features क्या है, तो पहला है database of birth and death. It adds that the Registrar General of India will maintain a national database of registered birth and death. Chief Registrar and registrars will be obligated to share data of registered birth and death to the national database. The chief registrar shall maintain a similar database at the state level. अगला है इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट, प्रोवाइड डिजिटल रजिस्ट्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ एंड डेथ. अगला है लिंकिंग विथ आधार टू कलेक्ट आधार नंबर ऑफ पेरेंट्स एंड इन्फॉर्मेट्स इन केस ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट इज कनेक्टिंग डाटाबेस. It states that the national database may be made available to other authorities preparing or maintaining other database like population register, electoral rolls, ration card, etc. अपील प्रोसेस क्या है, तो एनी पर्सन aggrieved by any action or order of the registrar or district registrar may appeal to the district registrar or chief registrar respectively within 30 days. अगला टॉपिक है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल एक्ट 2023. न्यूज़ में क्यों था, द प्रेसिडेंट हैज़ ग्रांटेड असेंट टू द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023 रिपीलिंग द colonial era law of the Press and Registration of Books Act 1867. बैकग्राउंड ऑफ द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 क्या है, तो पहला सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट ऑफ 1799 अंडर द लॉर्ड वेलेस्ली टू साइलेंस द प्रेस बिफोर ए पोटेंशियल फ्रेंच invasion of India. However, it was retreated in 1818 by Lord Hastings. Next is Licensing Regulation Ordinance 1823 under John Adams. The ordinance has a draconian provision that no one could start or continue to use a press without registration. Raja Ram Mohan Roy's Mirat ul Akhbar had to cease publication due to this act. Next is Press Act of 1835 under Metcalfe. The act was seen as a ray of liberation and thus earned Metcalfe the respectable title of Liberator of Indian Press. As a consequence, the Indian vernacular press saw rapid growth across India between 1835 and 1857. The Licensing Act of 1857. Due to the revolt of 1857, this act emerged which imposed licensing restriction in addition to the pre-existing regulation process. Next is Press and Registration of Books PRB Act 1867 under John Lawrence. The act made it mandatory for every article or print to have the name of the printer, publisher and the place of publication printed. Further amendment क्या है, the act was amended many times between 1870 and 1983 but it remained procedurally cumbersome and complex especially for small and medium publisher. Key provision of PRP Act 2023. की प्रोविजन क्या है, और प्रेस एंड रेगुलेशन पीरियोडिकल्स एक्ट 23 क्या है, तो पहला रजिस्ट्रेशन ऑफ periodical do not include book or scientific and academic journal. Book are outside the preview of the act. Foreign periodicals क्या है, तो ए facsimile of a foreign periodical may be printed in India only with the prior approval of the central government. Facsimile means an exact reproduction of the original. Declaration for printing press.
It allows the publisher of a periodical to obtain a registration certificate by filing an online application with the Press Registrar General (PRG) and specified local authority. Registration of a printing press. The PRP Act 2023 allows for information regarding a printing press to be submitted through an online portal. Penalties क्या होगा? The 23 Act seeks to decriminalize the colonial era statute by replacing jail term with fine. काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन क्या है? तो PRP Act 2023 empower the press registrar general to suspend, cancel the certificate of registration. Also, a person who has been convicted of a terrorist act or unlawful activity or has acted against the security of the state will not be allowed to publish a periodicals. अगला टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023. ये न्यूज़ में क्यों था? द प्रेसिडेंट गेव हिज असेंट टू टेलीकॉम बिल 2023 टू रिप्लेस द 138-year-old इंडियन टेलीग्राफ एक्ट. मोर अबाउट द न्यूज़ क्या है? द एक्ट रिप्लेसेस द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1993 एंड टेलीग्राफ वायर अनलॉफुल पोसेशन एक्ट 1950. It also amended the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) Act 1997. की प्रोविजन ऑफ द एक्ट क्या है? तो असेसमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम एलोकेशन बिल वी थ्रू ऑक्शन एंड फॉर स्पेसिफाइड यूजर ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस. स्पेसिफाइड पर्पसेस इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करेगा? तो नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, ट्रांसपोर्ट, सैटेलाइट सर्विस. For the first time, administrative allocation will be done of a spectrum for the satellite broadband service in line with global norms. Appointment to TRAI क्या है? तो TRAI Act has been amended to allow individual with पहला at least 30 year of professional experience to serve as a chairperson and at least 25 year of professional experience to serve as a member. Next is education process. Appointment of an educating officer to conduct inquiries against civil offences. Approval against the order of a committee in connection to breach of term and condition may be filed with Telecom Dispute Settlement and Appraisal Tribunal (TDSAT) within 30 days. Protection of user. Central government may provide for measures to protect user. Example: prior consent to receive specified messages, creation of do not disturb registrar, and allowing user to report malware of a specific message. अगला right of way. Entitles building infrastructure can seek right of way, facilitating the use of property over public or private property. Power of interception and search. Messages can be intercepted, monitored, or blocked on certain grounds, including security of the state, public order, and prevention of incitement of offense. Next is authorization for telecom related activities. Prior authorization of central government needed to provide, operate, maintain, or expand new telecommunication services and to possess radio equipment. Next is regulation of OTTs. OTT platform will not be regulated under the Telecom Act 2023. Other provision क्या है? तो डिजिटल भारत निधि. The bill renamed the Universal Service Obligation Fund as Digital Bharat Nidhi and allow it user for research and development in telecom sector. Trusted sources regime, which came into being after the 2020 Indo-Chinese borders skirmishes to stop import of telecom equipment from hostile nation, is now part of the law. अगला है इंटरनेट शटडाउन. न्यूज़ में क्या था? एज पर रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडर IFF and Human Rights Watch HRW, most internet shutdown in last 3 years were to curb protest. Internet shutdown in India. कब था? तो internet shutdown include action that restrict access to the internet completely or slow down speed or restrict certain content. Currently, the suspension of telecom services, including internet shutdown, is governed by temporary suspension of telecom services, Public Emergency and Public Safety Rule 2017, notified under the Indian Telegraph Act of 1885. 2017 rule provide for a temporary shutdown of telecom services in a region on ground of public emergency up to 15 days at once. The law empowers senior bureaucrats from the Home Ministry and center and state level to order shutdown. Key guidelines proposed by Supreme Court in
Radha Basin versus Union of India case 2010. An order suspending internet service indefinitely is impermissible under the temporary suspension of telecom service public emergency on public service rule 2017. Suspension can be utilized for a temporary duration only. Any order suspending the internet issue under the suspension rule must adhere to the principle of proportionality and must not extend beyond necessary duration. Any order suspending the internet under the suspension rule is subject to judicial review. The court has also declared the freedom of speech and expression, as well as freedom of trade and commerce through internet, are constitutionally protected rights under Article 19, Clause 1, Subclause A and Article 19, Clause 1, Subclause G. अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में क्या क्या है तो केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995. The Ministry of Information and Broadcasting has notified amendments in the Cable Television Network Rule 1994. It provides the operational mechanism for implementation of the decentralized provision of Cable Television Network Regulation Act 1995. Aim क्या है तो to make the Cable Television Network Regulation Act of 1995 more business friendly and to boost investor confidence and ease of doing business. Sections of the Act were re-examined and were decentralized through the Jan Vishwas Amendment of Provision Act 2023. The imprisonment provision has been now replaced with monetary penalties and other non-monetary measures like advisory warning etc. Advocates Amendment Act 2023. The Act passed by Parliament seek to make the act of tort punishable and repeal certain provisions of Legal Practitioners Act 1879 which has become obsolete. Provision क्या है तो it provide that every high court and district judge can frame and publish list of torts. Such person named in the list of torts will be excluded from entering the court premises. Tort refers to a person who either proposes to procure or procures the employment of a legal practitioner, return of any payment. Next is Commission of Inquiry Act 1952. Government has notified a Commission of Inquiry under Commission of Inquiry Act 1952 to inquire into incident of violence in Manipur. It authorizes central and state government to appoint inquiry commission to make inquiries in definite matter of public importance. Central government can appoint a commission to make inquiry in any matter relatable to any of the entries enumerated in list 1 and 3 of Schedule 7. State government can appoint commission for entries enumerated in list 2 or 3 of Schedule 7. Foreign Contribution Regulation Act FCRA. Ministry of Home Affairs has suspended foreign funding license of Care India over alleged violation of FCRA. FCRA was enacted during emergency in 1976 to regulate foreign donation to individual and associations so that they functioned in a manner consistent with values of a sovereign democratic republic. It was amended in 2010 to consolidate the law on utilization of foreign fund and to prohibit their use for any activities detrimental to national interest. Law was amended again in 2020, giving the government tighter control and scrutiny over receipt and utilization of foreign funds by NGOs. Next is emergency properties. Emergency property refers to property of asset held or managed on behalf of an emergency subject or an emergency company. Emergency or emergency subject or emergency firm. Enemy or enemy subject or enemy firm means a person. पूरा पढ़ते फिर से. Enemy properties. Enemy property refers to a property or asset held or managed on behalf of an enemy subject or enemy company. Enemy or enemy subject or enemy firm means a person or a country who or which was an enemy under the Defence of India Act DOI 1962 and DOI Rule 1962 or the DOI Act 1971 and DOI Rule 1971. To administer these properties, the Enemy Property Act was enacted in 1968.
The law empowered the custodian of enemy property in India (CEPI) under Union Minister of Home Affairs to manage and preserve the enemy properties. In 2017, the Enemy Properties Amendment and Validation Act was enacted which allows transfer of enemy property from the enemy to the other person. अगला है सेवंथ पार्ट है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी इन न्यूज़. तो कौन कौन सा न्यूज़ में रहा? पहला है लोकपाल. न्यूज़ में एक था तो ए हाई लेवल सर्च कमिटी हैज एक्सटेंडेड द डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ एंटी करप्शन ऑम्ब्यूड्समैन लोकपाल. अबाउट लोकपाल क्या है? तो इन 1966 द टर्म लोकपाल लोकायुक्त coined by L.M. Singhvi was first used in a report of the Administrative Reform Commission. Lokpal is a national anti-corruption ombudsman to look into complaints against public servants which are defined under the Lokpal and Lokayukt Act 2013. According to the Act, there shall be a director of inquiry not below the rank of Joint Secretary who shall be appointed by the government. To conduct primarily inquiry refers to the Central Vigilance Commission (CVC) by the Lokpal. Though Lokpal came into being in 2019, Director of Inquiry has not been yet appointed. Lokayukt क्या? तो Lokayukt are state equivalent of Central Lokpal. Some states already have established Lokayukt. For example, Maharashtra in 1971 and Kerala in 1999. They shall have jurisdiction over CM, Minister, MLA, all state government employees and certain private entities, including religious institutions. लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 क्या क्या है? तो कंपोजिशन इसका क्या है? तो लोकपाल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन एंड अ मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर, of which 50% shall be judicial member and 50% shall be from SC, ST, OBC, minorities and women. टेन्योर ऑफ ऑफिस क्या है? तो चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ लोकपाल आर अपॉइंटेड फॉर टर्म ऑफ 5 years और अंटिल अटेनिंग एज ऑफ 70 years विच एवर इज ईयरलियर. सिलेक्शन कमीशन SC. चेयरपर्सन एंड लोकपाल मेंबर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ SC. सिलेक्शन कमिटी कंसिस्ट प्राइम मिनिस्टर, चेयरपर्सन, लेजिस्लेटिव स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड CJI और हिज नॉमिनी, एंड एमिनेंट जूरिस्ट nominated by president based on recommendation of other member of panel. As per Lokpal Act of 2013, Department of Personnel and Training needs to create a list of candidates who are interested to become the chairperson of member of Lokpal. Confiscation of property acquired by corrupt means even while prosecution is pending. Timeline for inquiry या investigation. 60 days for completion of inquiry and 6 months of completion of investigation by CBI. This period of 6 months can be extended by Lokpal on a written request from CBI. Power with respect to CBI. The power of superintendents and director over any investigation agency including CBI for cases referred to them by Lokpal. Transfer of officer of CBI investigating case referred by Lokpal would need approval of Lokpal. Removal कब होगा? तो Lokpal member and chairperson shall be removed by president after the inquiry by Supreme Court. For that, a petition has to be signed by at least 100 member of parliament MPs. Lokpal jurisdiction क्या है? तो it extend to prime minister, minister, MP, group A, B, C, D, E, officer and official of central government. Any security or trust body that receives foreign contribution above 10 lakh rupees. अगला डिलिमिटेशन कमीशन. तो ये न्यूज़ में क्या था? तो सुप्रीम कोर्ट asked the center to set up a fresh delimitation commission to ensure a proportional representation of the communities specified as scheduled caste SCs and scheduled tribe STs as mandated under the constitution. delimitation commission क्या है? तो आर्टिकल 82. Parliament enact a delimitation commission. It is responsible for the adjustment of the constitutionaries, number and boundaries of Lok Sabha and state assemblies after every census. Its decisions are considered final and are unchallengeable in any court. The copies of its order are laid before the House of the People and the State Legislative Assembly concerned, but no modification are permissible therein by them.
कंपोजिशन क्या होगा? तो ए सुप्रीम कोर्ट जज करंट और रिटायर्ड एक्ट एज अ चेयरमैन, द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एन इलेक्शन कमीशन नॉमिनेटेड बाय हिम और हर रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। डिलिमिटेशन इन इंडिया कब होता है? डिलिमिटेशन कमीशन हैज बीन सेट अप इन 4 times since independence, that is in 1995, in 1952, in 1963, 1973 and 2002. In 1976, the 42nd constitutional amendment froze the delimitation exercise until the first census after 2000 was published. In 2002, the 84th constitutional amendment further extended the freeze for 25 years till 2026. अगला डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट न्यूज़ में क्यों है? तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द थर्ड एक्सटेंशन गिवन टू द डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी चीफ इनवैलिड पावर ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट पावर टू सीज एसेट, पावर टू समन, same power as a civil court regarding discovery, inspection, production of evidence, summon, examining, issuing commission, etc. Power to arrest, can investigate and make arrest for violation of PMLA 2002 and FEMA 1999 without waiting for registration for a formal FIR by police. Record admissibility क्या है? तो in 2022 the Supreme Court ruled that statements recorded by ED officer can be admitted as evidence in court. Recovery of fines, penalties and arrears of penalties under the FEMA Act. Enforcement Directorate ED establishment कब हुआ था? In 1952 under Department of Revenue, Ministry of Finance. Composition क्या है? तो headed by ED Director who is appointed as per provision of Section 25 of CVC Act 2003. Tenure क्या है? तो 2-year tenure but can be given 3 annual extension. Function क्या है? तो responsible for enforcement of पहला Foreign Exchange Management Act 1999, FEMA, Prevention of Money Laundering Act PMLA 2002, Fugitive Economic Offender Act FEOA 2018 and Conversion of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Act of 1974 कॉफे पोसा। अगला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। तो न्यूज़ में क्यों आया? तो तमिलनाडु विड्रॉ जनरल कंसेंट अकॉर्डेड टू CBI टू प्रोव केसेस इन स्टेट। CBI इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? तो एंटी करप्शन पहला, दे आर यूजली रजिस्टर्ड अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। The superintendence of CBI related to the investigation of offences under the Prevention of Corruption Act 1988 lie with CBC. Special crimes investigation of serious and organized crime under IPC on request of a state government or on order of Supreme Court and High Court. Economic offence क्या है? तो crimes of financial malfeasance, bank fraud, money laundering, black money, corruption, etc. However, CBI usually transfer cases of money laundering to ED. Suo motu, CBI can suo motu take up investigation offences only in the UTs. The central holds the power to authorize the CBI to investigate a crime in a state only after the consent of concerned state. However, Supreme Court and High Court can order CBI to investigate a crime anywhere in country without consent of the state. About general assent. It is requested under Section 6 of Delhi Special Police Establishment Act 1946. The consent of the state government to CBI can either general or case specific. General consent is consent by default. Recently, multiple states have withdrawn general consent like West Bengal, Mizoram, Punjab, etc. Exception to general consent. The Supreme Court and High Court can order CBI to investigate a crime anywhere in the country without consent of the state. Consent does not apply in cases where someone has been caught red-handed taking a bribe. In case of a specific consent, CBI would have to apply to the state government in every case. If a specific consent is not granted, the CBI officials will not have the power of police personnel when they enter the state. Without
Withdrawal is not applicable in case in which the investigation is already in progress. नेक्स्ट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। तो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था इन 1963 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेज। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट DSPE एक्ट 1946 रिकमेंडेड बाई संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962 एंड 64। कंपोजिशन क्या हुआ? तो हेडेड बाई डायरेक्टर ऑफ सीबीआई अपॉइंटेड बाई 3-member कमिटी, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टेन्योर क्या है? तो 2-year टेन्योर बट कैन बी गिवन 3 annual एक्सटेंशंस। फंक्शन क्या होगा? तो फोकस ऑन कॉम्बैटिंग करप्शन इन पब्लिक लाइफ, कर्व इकोनॉमिक एंड वायलेशन क्राइम थ्रू मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, fight cyber and higher technology crime, provide assistance to Central Vigilance Commission CVC and Lokpal. It is the nodal police agency in India which coordinates investigation on behalf of Interpol member countries. Next is National Cadet Corps NCC. न्यूज़ में क्यों था? तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC, द लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड youth organization in the world, celebrate its 75th anniversary in 2023. About NCC क्या? तो it came into existence under the National Cadet Corps Act 1948. Pandit H.N. Kunzru committee recommended a cadet organization to be established in a school and colleges at a national level. Aim क्या है? To create organized, trained and motivated youth to provide leadership in all walks of life and always available for the service of the nation. It is tri-service organization comprising the army, the navy and the air wing. हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है। NCC डायरेक्टरेट। NCC at the state level is divided into 7 directorates in which each state or group of state of or UTs form a directorate. नेचर ऑफ NCC प्रोग्राम, पहला वॉलंटरी और दूसरा द स्टूडेंट हैव नो लायबिलिटी फॉर एक्टिव मिलिट्री सर्विस। NCC ऑफिसर 3 types of certificate offers 3 types of certificate based on duration. NCC versus National Service Scheme NSS. While both are voluntary in nature, there are certain differences. Difference between NCC and NSS. पैरामीटर क्या है? तो एक होगा NCC का और दूसरा होगा NSS का। मिनिस्ट्री क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस NCC का और दूसरा का है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट का हुआ? तो NCC हुआ 1948 में और NSS हुआ 1969 में। एम किया था? टू फॉस्टर डिसिप्लिन, सेल्फनेस, यूथ लीडरशिप फॉर नेशनल सर्विस एंड मिलिट्री कैरियर। वहीं NSS में डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट पर्सनालिटी थ्रू कम्युनिटी सर्विसेज। इस्टेब्लिशमेंट थ्रू क्या हुआ था? तो NCC हुआ था नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 31 ऑफ 1948 और इसका हुआ था NSS का सेंट्रल सेक्टर स्कीम। यूनिफॉर्म क्या होगा? तो कंपलसरी यूनिफॉर्म फॉर NCC कैडेट्स, नो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड फॉर NSS वॉलंटियर। हु कैन ज्वाइन? तो जूनियर डिवीजन विंग, student from school of 13 year or more of age, senior division wing, student from college and 11 and 12 classes. वहीं NSS के लिए 11th and 12th class student for technical institution, graduate and post graduate at college and university level of India. अगला अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI। Ravneet Kaur has become the first woman chairperson of CCI। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? तो पहला स्टेचुरी बॉडी है। जेनेसिस क्या है? तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2003 अंडर कंपटीशन एक्ट 2002। मिनिस्ट्री क्या है? तो एफिलिएटेड ऑफिस विथ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स। कंपोजिशन क्या होगा? तो CCI कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 6 member अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फंक्शन क्या होगा? तो एलिमिनेट practices having adverse effect on competition, promote and sustain competition, protect interest of consumer and ensure freedom of trade in market of India. Next is Global Alliance of National Human Rights Institution GANHRI. It was established in 1993 as International Coordinating Committee of National Institution for Promotion and Protection of Human Rights ICC. General Assembly in GANHRI's supreme deliberative body. Bureau is the
ANHRI Executive Committee. It is comprised of 16 members, 4 from each of GNHRI region network of Africa, America, Asia Pacific and Europe. हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ACC. ACC has approved appointment for the post of Directorate of the Special Protection Group SPGs. The force has handled the security of the MP. About ACC क्या है? तो it decide all higher level appointment in Central Secretariat, Public Enterprises, Bank and Finance Institution. It is chaired by the PM. Ministry of Home Affairs is also a member. Next is Press Information Bureau PIB. Press Information Bureau marked its centennial anniversary. Press Information Bureau PIB नॉन स्टेचुरी बॉडी है. अबाउट इसमें क्या होगा? तो नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिसमिनेट इंफॉर्मेशन टू द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोग्राम. जेनेसिस क्या होगा? तो सच स्टेप्स set up as a temporary cell under then British government in 1919. In 1923, the bureau was made permanent as the Bureau of Public Information. It acquires its present name in 1946 and became a department of Ministry of Information and Broadcasting after 1947. Composition क्या हो जाएगा? तो Principal Directorate General Media and Communication who is asserted by the Director General and 8 additional Director General. Function इसका क्या हो जाएगा? तो as an interface between the government and the media and also serve to provide feedback to the government and on people's reaction as referred in the media. Next is National Center for Good Governance NCGG. NCGG has completed the training of 24th batch of Maldivian civil servant. About NCGG. Genesis क्या हो जाएगा? तो set up in 2014 under Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension. Governing body क्या होगा? तो headed by Cabinet Secretary. Objective क्या होगा? तो improve governance, policy reform, capacity building and training of civil servant and technocrats of India and other developing countries. Function as a national repository of information on best practices, initiative and methodologies that promote good governance. National Investigation Agency NIA. NIA conducted searches at various locations to locate those involved in attack on High Commission of India in London. The NIA was formed under NIA Act 2008 in the aftermath of 26/11 attack. It is a federal counter-terror agency that can take up suo motu cognizance of terrorist activity in any part of India. NIA Amendment Act 2019 empowered NIA to investigate scheduled offence committees outside India subject to international treaties and democratic law of other countries. Act 2019 also empowered the center to designate session court and special court for NIA trial. Cabinet Secretary. General Secretary was granted extension for another year. About CS appointed by the Appointments Committee of the Cabinet ACC on sanitary cum merit basis. CS is responsible for administration of the GOI allocation of Business Rule 1961 and GOI transition of Business Rule 1961. CS is also the head of Civil Service Board CSB. अगला है 8 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस और ये लास्ट हमारा हेडिंग होगा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस. इसमें कुछ टॉपिक्स है जो न्यूज़ में आया था उसे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में. इसमें पहला होगा मिशन कर्मयोगी. तो इससे हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं वीडियो लेक्चर को. उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और हमारी पहल आपको अच्छी लग रही होगी. तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी. और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के UPSC एग्ज़ाम देने वाले हैं. उन लोगों तक इसे जरूर पहुँचा ताकि वो भी करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से कर सकें. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें. देखते रहें. जय हिंद, जय भारत.
जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन IAS PT 365 सीरीज़ में, जिसमें लोग पॉलिटी कर रहे हैं। और यह अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का पूरा कंपाइलेशन है। और यह मोस्ट प्रोबेबली हमारे इस पूरे सीरीज़ का आखिरी वीडियो लेक्चर होगा। इसमें हम लोग 8वां टॉपिक आज करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस है। पहले का हम लोगों ने 7 टॉपिक कर लिया है, तो अगर आप लोगों ने पहले के टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, आप लोग जाइए, इसे चेक कीजिए। और इसके साथ ही हम लोगों ने विजय वाजरा एंड रवि का भी पूरा करंट अफेयर मतलब चल रहा है उसका प्लेलिस्ट, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उसे भी जाइए, चेक कीजिए। और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और हमारा ये चैलेंज रहेगा कि हम जितना भी करंट या जितना भी मटेरियल डालेंगे तो UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो आप बस हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और जो भी हम लोग डालते हैं उसे टाइम टू टाइम आप लोग रिवाइज़ करते रहें, देखते रहें। और जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना ही आपका एग्जाम के लिए अच्छा होने वाला है। तो बस उसे आप रिवाइज़ करते रहें, देखते रहें, सुनते रहें। सुनने से भी लाभ होता है और आप लोग करंट अफेयर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी लोग आपके जान पहचान में होंगे या सर्किल में होंगे जो इस बार UPSC प्री देने वाले हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ, ताकि उन्हें भी करंट अफेयर का अच्छा खासा लाभ मिले और उनके भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होने वाला है। और शुरू करने से पहले फिर से यही अनुरोध रहेगा आपसे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए आज का हमारा टॉपिक यहाँ शुरू होने वाला। आइए टॉपिक, और ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ आ गया। यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। इसमें पहला है मिशन कर्मयोगी। तो ये न्यूज़ में क्या हो रहा था, ऑन गुड गवर्नेंस डे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन लॉन्च्ड एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ मिशन कर्मयोगी। अबाउट मिशन कर्मयोगी क्या है, तो मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेबिलिटी बिल्डिंग एम एट बिल्डिंग a future ready civil service with right attitude, innovative professional etc, skilled technology embedded and knowledge allied to the vision of new India. New features launched on mission कर्मयोगी प्लेटफॉर्म क्या है, तो माई I got delivers targeted training course of individual officer, blended program, facilitate equitable access to training methodologies across all levels and integrates ऑफलाइन क्लासरूम कोर्स विथ ऑनलाइन लर्निंग कंपोनेंट। विकास क्या है, तो वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट, न्यू ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। क्यूरेटेड प्रोग्राम क्या है, तो केटर डाइवर्स लर्निंग नीड ऑफ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। 12 domain specified capacity building e-learning courses has been developed. Institution has been issued regarding acceptance of award by government servant from private bodies and institute in accordance with Rule 14 of Central Civil Service Conduct Rule 1964. Central Civil Service Conduct Rule 1964 govern the conduct of government employee in India. कर्मयोगी प्रारंभ क्या है, तो it is an online or orientation program under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension. The program aimed to provide all the necessary details related to government policies for newly appointed recruited through Rozgar Mela. It includes a set of 8 courses curated to help all Rozgar Mela appointee. It falls under the ambit of Mission Karmyogi. यहाँ पे गुड गवर्नेंस डे के बारे में देख लेते तो सिंस 2014 इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर इन ऑनर ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी टू प्रमोट सिटीजन सेंट्रिक efficient and transparent governance and improve service delivery. अगला 6 पिलर्स ऑफ मिशन कर्मयोगी। पहला है पॉलिसी फ्रेमवर्क, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, तीसरा है कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, चौथा है डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी, पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ई हार्म्स, और छठा है मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन फ्रेमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक इज राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI। न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट to fill the vacancies in the Central Information Commission CIC and State Information Commission. About the right to information, RTI क्या है, तो RTI means that any Indian citizen can request any information which is supposed to be public knowledge from office or department of a state or central government. नोडल एजेंसी क्या है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। की प्रोविजन ऑफ RTI एक्ट 2005 क्या है, तो सेक्शन 2 क्लॉज H पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एन अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड क्या क्या, तो बाई
or under the Constitution, by any other law made by Parliament, state legislature, by notification issued or order made by the appropriate government, and includes any क्या तो body owned, collected or substantially financed or and non-governmental organizations substantially financed directly or indirectly by fund provided by the appropriate government. Section 6 Clause 1. A person who desires to obtain any information shall make a request in writing or through electronic means to the Central Public Information Officer PIO or State PIO. Section 7 fixes the time limit for providing informations by PIOs. Section 8 Exemption from disclosure of information. Exemption under RTI Act 2005. Section 24 of the RTI Act says that this law is not applicable to the intelligence and security organizations specified in the second schedule. However, information pertaining to allegation of corruption and human rights violations shall not be excluded. The second schedule includes under its ambit institutions like RAW, IB, CRAT in etc. Other exemptions under RTI Act 2005 include क्या क्या, तो Section 8 Clause 1 list of all the exemptions of the information referred table. तो देख लेते हैं यहाँ टेबल के अंदर क्या क्या है. तो whose disclosure would prejudicially affect sovereignty and integrity of India, security, strategic, scientific or economic interest of a state, relation with foreign state or lead to incitement of offense which may constitute contempt of court. अगला है that would cause a breach of legislative privilege. Next है received in confidence from foreign government. Next is available to a person in his fiduciary relationship unless competent authority is satisfied that larger public interest warrant disclosure of such information. इधर है including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, disclose of which would harm competitive position of a third party unless compete authority is satisfied that larger public interest warrant disclosure of such information. The disclosure of which would endanger life or physical safety of any person, which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offender. Cabinet paper which come under satisfied exemptions which relate to personal information, the disclosure of which has not relationship to any public activities or interest or which would cause unwanted invasion or the privacy. Section 8 Clause 2 Information exempted under subsection 1 and Official Secret Act 1922 can be disclosed if the public interest is in disclosure outweighed the harm to the protected interest. यहाँ पे देख लेते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC क्या है. तो पहले ध्यान रखेंगे यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. फिर एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूटेड विथ एफर्ट फ्रॉम 2005 अंडर RTI Act 2005. अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी कंसिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय PM. टेन्योर क्या है, 3 साल और 65 साल ऑफ एज. कंपोजिशन क्या है, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC एंड not more than 10 information commissioner ICs not eligible for reappointment. Function क्या होगा, the power of civil court in respect of summoning, requiring documents etc. Receive and inquire into a complaint from any person regarding information request under RTI 2005. अगला न्यूज़ है आधार. तो ये न्यूज़ में क्यों रहा, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ proposed rules to enable Aadhaar authentication by entities other than government ministries and departments for better delivery of service to citizen. More in news में क्या है, तो at present ministry of department are allowed to undertake Aadhaar authentication under 2020 rules. It is allowed for purposes like in the interest of good governance, preventing leakage of public fund and enablement of innovation and spread of knowledge. Entities such as bank and telecom companies were allowed to perform authentication if UIDAI were satisfied with standard of privacy and security. Now it is proposed that any entity other than a ministry of department that desire to use Aadhaar authentication needs to submit its proposal to the concerned ministry or department at the central or state level. की टेक्नोलॉजी फीचर्स क्या है, तो बायोमेट्रिक बेस्ड डिडुप्लीकेशन, बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर्स BSPs
presently operational, use physical image and additional biometric attribute for deduplication along with 10 fingerprints and 2 iris. Biometric fraud detection. Biometric service provider BSP can currently detect mixed biometric, wrong finger, no human finger, gummy finger, invested iris image and closed eye during enrollment. Constitutionality of Aadhaar Act. Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India. Aadhaar Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefit and Service Act 2019. Aadhaar Act was challenged before the Apex Court on the ground that it was passed as a money bill, thereby circumventing the upper house of parliament. In its K.S. Puttaswamy versus Union of India judgment 2018, टॉप कोर्ट अफर्म द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द आधार एक्ट. की ऑब्जर्वेशन क्या है? तो एक्ट वाज competently passed by parliament even though it was passed as a money bill. Act does not violate the fundamental rights guaranteed under Article 14, 15, 19 and 21. Aadhaar would be mandatory for accessing social welfare scheme, but it cannot be forced on people for opening bank account or for mobile and internet connection. यहाँ पे की फीचर्स ऑफ आधार देख लेते हैं. तो यूनिकनेस इसमें क्या है? तो इट इज़ अ 12 डिजिट यूनिक नंबर एंड no reside can have a duplicate number since it is linked to their individual biometric. Random number क्या होगा? Does not capture detail like caste, religion, income, health, geography, etc. Scalable technology architecture. Residence data is stored centrally and authentication can be done online from anywhere in the country. Targeted delivery क्या होगा? तो आधार is mandatory for receiving subsidy or benefits under section 7 and fitting and filing income tax return. Proof of Aadhaar and identity क्या है? तो it serves as proof of identity and proof of address for residents of India. Aadhaar is not a proof of citizenship. Electronic benefit transfer. The UID enabled bank account network will offer a secure and low cost platform to directly remit benefit to residents. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI क्या है? तो पहला तो ये स्टेटरी बॉडी है. फिर जेनेसिस में क्या हो जाएगा? तो इस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द आधार एक्ट 2016 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैत्री. फंक्शन इसका क्या हो जाएगा? तो टू इशू यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIDI. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आधार इनरोलमेंट एंड ऑथेंटिकेशन इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ आधार लाइफ साइकिल, developing the policy, procedure and system for issuing Aadhaar number to individual, platform authentication and the security to identity of information and authentication record of individual. अगला है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग. तो न्यूज़ में क्या था? द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैत्री हैज़ अमेंडेड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी intermediary guidelines and digital media ethics code rule IT rule 2021. मोर इन न्यूज़ में क्या है? तो एम इज़ टू इन्फोर्स ग्रेटर ड्यू डिलीजेंस बाय ऑनलाइन गेमिंग एंड सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन गेम्स एंड फेक और फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू government business. The rule and amendments of IT Rule 2021 have been brought out under Section 87 of the Information Technology Act 2000. IT Rule 2021 were brought out for regulating social media intermediaries. Key feature of the rules on online gaming क्या है? तो class definition. Online gaming means a game that is clear definition में क्या है? तो online gaming means a game that is offered on the internet and is accessible by a user through a computer resource or an intermediary. Online gaming intermediary. OGI means an intermediary that enable the user of its computer resource to access one or more online games. Role of intermediaries क्या है? To make a reasonable effort to not host, publish or share any online game that can cause the user harm or that have not been verified as a permissible online game by an online gaming self-regulatory body या bodies SRBs designated by the central government. The intermediary will also have to ensure that no advertisement or surrogate advertisement or promotion of an online game that is not a permissible online game is hosted on its platform. Additional obligation of OGI क्या है? तो द amended rule cast additional obligation
on OGI in relation to online gaming involving real money. These include क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा the displaying of a mark of verification by the self-regulatory body on such games. दूसरा है informing their user of the policy for withdrawal or refund of the deposit. तीसरा हो जाएगा obtaining the KYC detail of the user and चौथा हो जाएगा not giving credit or enabling financing by third party to the user. Multi SRB. The Maitri may notify multiple SRBs for the purposes of verifying an online game as a permissible one. An SRB should fulfill the following criteria. Palaga company registered under Section 8, not for profit entity of the Companies Act 2013. Representative of the online gaming industry promoting online games is in a responsible manner. Incorporates provision related to grievances redressal, arm's length principle, disclosure and reporting, and clear criteria for membership. Authority of SRBs. The SRB may categorize any game as a permissible game if it is satisfied that कौन सा point? तो पहला, the online game does not involve wagering on any outcome. Second, the OGI and the game comply with the rules and the requirement under law for being competent to enter into a contract currently at 18-year end. Third हो जाएगा the OGI and the game complies with the framework made by the SRB regarding safeguard. Prohibition क्या हो जाएगा? तो online game that involve any kind of gambling including ads will be prohibited. अगला टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया. न्यूज़ में क्यों था? तो recent findings suggest that the pendency in the consumer commission has shown a decline trend from 5.57 lakh in December 2022 to 5.45 lakh in September 23. Who is a consumer? Consumer कौन है? तो under the Consumer Protection Act CPA 2019, a consumer is a person who buy any good or avail service for a consideration which has been paid or promoted, a partly paid and partly promised, or under any scheme or deferred payment. It applies to both offline and online transaction through electronic means or by teleshopping or direct selling of multi-level markets. However, any person who obtain goods or avail service for resale or commercial purposes is not treated as a consumer and is outside the scope of CPA 2019. Measures taken for consumer protection in India. Consumer Protection Act CPA 2019, it provide for the Central Consumer Protection Authority CCPA, Consumer Protection Jurisdiction of District Commission, State Commission and National Commission Rule 2021 to provide simple, speedy and inexpensive redressal of consumer disputes. CPA 2019 envisages 3-tier quasi-judicial mechanism at national, state and district level. CONFONET project, it stands for computerization and computer networking of consumer fora in country. It was implemented in the backdrop of CPA 1986. It aimed to improve operational efficiency, coordination, accessibility and spread in judicial administration and to set information communication technology ICT infrastructure at Consumer Redressal Commission all over India. Integrated Grievances Redressal Mechanism INGRAM portal. It was developed under the aegis of the Department of Consumer Affairs to create awareness, advise and redress consumer grievances and act as a central registry for logging consumer grievances. E-Dikshit portal. It provides a hassle-free, speedy and inexpensive facility to consumer and the country to convincingly approach the relevant consumer forum, dispensing the need to travel and by physical present. Certification markers क्या है? तो it to protect and sensitize consumer regarding quality standards. Right of a consumer as given by CPA कौन कौन सा राइट्स है? तो राइट टू फाइंड इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. दूसरा है राइट टू सेफ्टी. तीसरा है द राइट टू बी हेयर्ड. चौथा है द राइट टू चूज और पांचवा द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. Our next topic is guidelines for celebrities, influencer and virtual influencer. तो ये न्यूज़ में क्यों रहा? The Advertising Standard Council of India ASCI has released the comprehensive guidelines for influencer advertising in digital media.
मोर इन न्यूज़ में क्या है, तो दीज गाइडलाइंस आर एन एक्सटेंशन ऑफ द गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड इंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट 2022. Department of Consumer Affairs Ministry will actively monitor and enforce these guidelines. Influence found to be a violation of new guidelines could face penalties under the Consumer Protection Act 2019. Key provision for celebrities, influencer and virtual influencer क्या है, तो guidelines for all. Disclosure all material in connection such as monetary or other compensation free products between the advertiser and the influencer. It must be upfront and prominent so that it is not missed by an average consumer. Terms include advertisements, sponsored collaboration and paid promotion can be used, which must be indicated as a hashtag or headline text. Due diligence. Endorsers are encouraged to conduct a thorough review and ensure they are in a position to sustain the claim made in the advertisement. They must use or experience a product or service before endorsement. Influencer must refrain from making false, misleading, and exaggerated claim. For health influencer, disclosure certification. Endorsers must disclose that they are certified health, fitness expert and medical practitioners. Disclaimer क्या होगा, तो endorser must ensure that the audience understand that their endorsement should not be seen as a substitute for professional medical advice. For influencer क्या हो जाएगा, तो registration can offer investment related advice which subjects like banking, financial service and insurance BFSI only after registering with the Securities and Exchange Board of India SEBI. Other financial influencer must also possess approach credentials such as a license from the Insurance Regulatory and Department Authority of India IRDAI. Guidelines for the prevention of misleading advertisement and endorsement from misleading advertisement 2022. की provision of guidelines क्या है, तो prohibit surrogate advertisement. No surrogate advertisement like alcohol brands advertising for soda or music shall be made for goods or services whose advertising is prohibited or restricted. Prohibit targeting children. Advertisement that take advantage of children inexperience have been prohibited. Penalties में क्या हो जाएगा, तो violations may lead to penalties under the Consumer Protection Act 2019 and other relevant provisions of the law. CCPA can impose a penalty of up to rupees 10 lakh on manufacturer, advertiser and endorser. For subsequent offence, a penalty can go up to rupees 50 lakh. अगला टॉपिक है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेन डीलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. न्यूज़ में क्या था, तो रिसेंटली इट वाज रिपोर्टेड दैट द स्टेट हैज़ रिजेक्टेड नियरली 40% ऑफ द लैंड क्लेम अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट. अबाउट फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006 क्या है, तो इट रिकॉग्नाइजेज द राइट्स एज ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज FDST एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर्स OTFD to forest resources. Type of rights under section 3 of FRA Act क्या, तो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट IFR, right to hold and live in forest land under the individual or common occupation of habitation or self cultivation for livelihood. Community forest rights CFR seeks to restore all customary and traditional rights of forest dwellers community. It will be within the traditional or consumer boundaries of the village irrespective of the ownership, classification and size of forest. Community forest resource management rights of ownership across to collect, use and dispose minor forest produce which has been traditionally collected within or outside village boundaries. Nodal agency for implementation क्या है, तो state government UT administration. Role of Gram Sabha, it is the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest right or both. Land titles क्या हो जाएगा, the act recognizes the right of an individual or family or community on the land, however claims should not exceed more than 4 hectares.
The land title given under the FRA is legal title. Land rights conferred by the Act were heritable, Section 4, Clause 4 of FRA, but not transferable or alienable. Diversion of forest land for local development rights, establishment of school, dispensaries or hospital, आंगनवाड़ी centers, etc. प्रोटेक्टेड एरिया में क्या हो जाएगा, तो FRA इज एप्लीकेबल इन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व. एक्ट इज important to protect the right to intellectual property and traditional knowledge related to biodiversity and cultural diversity. 3-tier अप्रूवल प्रोसेस क्या है इसका, तो देख लेते हैं. ग्राम सभा is the primary authority for initiating the whole process by receiving and verifying the claims. Aggravated person from the resolution of Gram Sabha may file a petition to the subdivision level community SDLC. Any person aggravated by the decision of the SDLC may file a petition to the district level community DLC. Decision of the DLC on the record of forest rights shall be final and binding. यहाँ पे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड रिलेटेड टू ट्राइब क्या है, तो देख लेते हैं. सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ FRA रिकॉग्नाइजेज द राइट of the forest dwelling tribal community FDSTs and other traditional forest dwellers OTFDs to hold and live in the forest land for habitation or for self cultivation for livelihood. Article 244 related to scheduled areas. Important judicial pronouncement related to the tribe कौन सा है, तो ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट ग्राम सभा ऑफ रीजन विल डिसाइड अबाउट द प्रोटेक्शन. नेक्स्ट है अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में कौन कौन सा है, तो पहला है ई गवर्नड स्टेट. केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल ई गवर्नड स्टेट इन इंडिया. इट हैज़ डिसाइज्ड अ रेंज ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज इंश्योरिंग प्रॉम्प्ट and transparent delivery to its citizen. E-governance meaning electronic governance is using ICTs such as wide area network, the internet and mobile computing for the purpose of enhancing governance. Initiative of Kerala क्या है, तो Kerala Fiber Optic Network KFON project which has made internet access a citizen's right. E-Savanam single portal for 900 public service to तालुका लेवल ऑफिसर. अगला है डिमार्केशन ऑफ रोल ऑफ MCA एंड मैत्री. सेंटर हैज़ डिमार्केटेड द रोल ऑफ बोथ मिनिस्ट्रीज टू रिमूव द पॉसिबिलिटी ऑफ duplicacy of regulations on digital market. India's digital market is expected to touch 1 trillion by 2025-26. The Ministry of Corporate Affairs MCA would be the nodal ministry to look into all the competition issued in the digital market. Ministry of Information Technology Maitri will look into sector specific issues. The government is working toward introducing legislation including Digital India Act and Digital Competition Law for regulating various facts of the digital market in India. अगला पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स PDI. Recently it is released by the Union Minister of Panchayati Raj. It provides a matrix of monitor and evaluate the process of panchayat through the sources achieved by them. It ranks panchayat on the basis of a score and categorize them into 4 grades. ग्रेड इंक्लूड कौन कौन सा, तो ए हो जाएगा 75 to 90%, बी हो जाएगा 60 to 75%, सी हो जाएगा 40 to 60% और डी हो जाएगा अंडर 40%. अगला है AAINA डाटाबेस फॉर सिटीज़. मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर लॉन्च्ड AINA database for cities portal. It will provide information on status and progress of cities on 5 broad thematic area. Digital India Corporation DIC will provide hand-holding to ULBs state in the data submission process. DIC provides strategic support to ministries, departments for carrying forward Digital India mission. 5 broad pillar of AINA database for cities क्या है, पहला political and administrative, second is finance, third is planning and fourth is citizen centric government and fifth is delivery on basic services. अगला गाइडलाइंस ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ अवार्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट. इट इज इश्यूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. की प्रोविजन ऑफ गाइडलाइंस क्या है, तो अवार्ड गिवन बाय प्राइवेट बॉडीज
or organization may be accepted only with prior approval of competent authority. Competent authority would be secretary of the concerned minister या department. Competent authority may grant approval subject to the following conditions. पहला, award should not have any monetary components, और दूसरा है credentials of private bodies should be trustworthy. अगला है नेक्स्ट है आर्टिकल 311 Clause 2 subclause C. Recently, Jammu and Kashmir government terminated 4 government employees under Article 311 Clause 2 subclause C for being a threat to the security of the state. Article 311 Clause 1. It provides that no civil servant under union or state shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed. Article 311 Clause 2. It provides that no civil servant shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has given informed of the charge against him and given a reasonable opportunity for being heard. Article 311 Clause 2 subclause C. It allows the government to terminate employees without ordering any inquiry or giving them an opportunity to explain their position if the president or the governor, as the case may be, is satisfied that in the interest of the security of the state it is not expended to hold such inquiry. और यहाँ पे हमारा यह पूरा का पूरा बुक खत्म होता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने सारे वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उसे जाइए जरूर चेक कीजिए। और इसी के साथ हम बाजीराव एंड रवि का भी करंट अफेयर कर रहे हैं जो कि पूरा 1 साल का कंपारिजन है, तो उसे भी आप लोग जरूर देखें। और इसी के साथ आने वाले और भी जितने भी PT 365 होने वाले, जैसे साइंस एंड टेक पे आएंगे, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी पे आएंगे, आर्ट एंड कल्चर, सब पे हम लोग करने वाले इसी तरह से डिस्कशन। तो आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहें और बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का UPSC प्री देने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप लोग रिवीजन करें, जितना ज़्यादा रिवाइज करिए उतना ही अच्छा आप लोग का क्लियर होगा और उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में कोई नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।